Acha, so the last moment tips which I have for the students who are at least writing the mains right now, the very first thing is that you have to at least make sure that you try to attempt all the questions. And by that, I simply mean you will start with the questions which you know well, and you will at least try to write something on the questions which you have a basic, or maybe you have less idea. That can be one thing. The second thing is that try to attempt the very first question. Those are the 10 markers. आप 10 markers से start करो और पहले जो 10 markers हैं उनको बहुत अच्छे से लिखना. Why? Because that is going to create a very good impact. In my attempt, in which I got 162 marks in paper one, this was one thing which helped me a lot, because I had written those questions of the paper of 2018 really well, और मैंने उनको थोड़े ज्यादा लिखा था, which means I wrote more than 150 words for those 10 for those 10 markers initially. After that, please attempt the 20 markers and the 15 markers, so on and so forth. और last में जो section B होगा जिसमें आपके 10 markers होंगे, try to attempt that. So this way you have created a good impression initially by covering the questions of जो एकदम starting में है, which gives a good impression to the examiner. The second thing is that you have also given an adequate time to the 20 markers and the 15 markers, which increases your chances of attempting of having better marks, right? So in both those factors you are done. The other thing, especially for PSI optional, is important is you have to make sure that you are structuring very well. By structuring, I mean that you have to have an intro. Body may try to be as multi-dimensional as you can be. For example, if the question is like, I think last year they had asked liberalism as a revolutionary idea. So if that is the question, to mention all the possible points. Start with Locke, how Locke's natural right was revolutionary when compared to the feudal system back then. Similarly, his social contract theory, his focus on individualism, his focus also on separation of powers and the existence of civil society, and he also calls for a night watchman state. So why is that revolutionary? You wo mention karo, but also try to mention the other perspective. Like, for example, after some time, the revolutionary edge of liberalism was taken away by socialism, because then equality of opportunity did not have the same appeal as the equality of outcome. So this is one of the ways in which we are trying to answer the question in all the possible dimensions, right? So ये एक जैसे, this is just an example of how we can structure, and we please make sure आप criticisms हर question में लिखो जहां पे भी possible है. For example, if the question is on security, and if we are writing the realist perspective from Morgenthau or Walt's point of view, so we also need to make sure that we will introduce maybe Barry Buzan's perspective, feminist perspective, other perspectives, so that the examiner gets a fair idea of what is important at this point of time, right? Structuring is very important for all the sections. आप जैसे भी लिख रहे हो, in whatever sense you are trying to write the answer, make sure structure अच्छा हो, और ये deliberately करना है. So for example, question अगर paper 1B का है, and if the question is maybe on Gandhi or Ambedkar, तो आप introduce them through a scholar or through a good introduction. Body में उन्होंने उनकी theories में और जो भी सारे major points है वो आप लिख लो. And after that, try to give a criticism. For example, if you're talking of Gandhi, we can mention the Gramscian perspective of Gandhi being an organic intellectual, right? But we can also criticize Gandhi through the works of Ambedkar's annihilation of caste. His analysis was not maybe all encompassing, or at least theoretical perspective. There were some gaps which some people have pointed out. So that makes for a complete answer. That is one thing. And last but not the least is that we need to make sure कि जो बाकी questions, like for example, if there is a question which you have not heard on democracy, on human rights, or maybe some other like concept, to try to think it from different schools. For example, you can think it from a realist school, you can think it from other schools. So if one is trying to think and answer from various perspectives, then you still have a decent answer. It might not be the perfect answer. Maybe, for example, I think this year Shubhra ma'am had asked, what is the implication of the withdrawal of troops from Afghanistan on
the feminist movement in general. Now you may or may not have come across this. ये directly आपने शायद नहीं पढ़ा होगा. So for that you have to now think, okay, what did the feminist movement have to say? What did Angie Tickner say? What did Cynthia Enloe say? So they have basically said that the global movements have by and large not encapsulated the rights of women. So now when the Afghanistan takes over, the women will suffer a lot because of this. Second thing is, we can mention the lack of global governance, and the institutions like United Nations or the United Nations Human Rights Council, they have not been able to cater to the needs of all these people. So this is something which can give us some, at least some structure to our answer. The other things we can point out at maybe institutional level, we can also tell these things at an institutional level, there seems to be a lack of coherence. Then we can also bring in that in the Western world, the feminist movement has a better reach, but whereas this same thing cannot be said for the movement in the post-colonial states. Just a second. Yeah. So this is a question like jisme even if you don't have the fair bit of knowledge, and even if you're not able to think on all the possible dimensions, you can still try to create an answer that can be helpful. That is one thing. Acha, and if there are other mains candidates, okay, Rajan has joined in. Rajan is also writing mains. Rajan, all the best to you. All the best also to Gaurav. And apart from that, if there is anybody, and I also welcome Kumar Vikram. He's a very good friend of mine who has consistently cleared with forest as an optional. I also welcome him to this live chat. Is there acha Gaurav, if you have any particular doubt, you can ask me. Nahi to fir I think I will take doubts from other people, because for mains, abhi aap like whatever you have at least aaj ka din, and tomorrow just try to go through your notes once. More or less you have been reading throughout the year, so that should not be a problem for you. So just keep be very confident, and you have written so much thought about it, so much given so much of effort, so definitely this is going to be a very good experience for you, so don't worry about it. And and I've also told you, Gaurav, a lot of times ki when I gave when I was supposed to write with political science in my first mains, I was literally shivering. I was thinking I will not be able to score good marks. In the end, I almost scored one of the highest marks in paper one, and overall also I scored very good marks. So just before the exam, at least the people who are giving it the mains for the first time, yes, there are a lot of nerves. One feels very jittery, but at least from my experience, what I can tell you, that at least go and give the paper without any expectations and just perform to the best of your ability. That will be all. So Gaurav, I think. थैंक यू. डाउट हो गया थे क्लियर और नहीं है डाउट? ठीक है. अगर और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आई कैन आंसर हियर एज वेल, अगर है तो ऑन द स्पॉट, नहीं तो फिर फाइन. बस स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हो किसी भी मतलब आईआर के क्वेश्चंस में, जैसे मैं पूछ रहा था कि पैराग्राफ फॉर्म में या मतलब प्रोज फॉर्म में या पॉइंट फॉर्म में, मतलब डज दैट मैटर? अच्छा, कोई क्वेश्चन तुम बोलो, नहीं तो आई कैन टेक अ क्वेश्चन बाय माय सेल्फ. ओके, ठीक है. मैं क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ आपको. जैसे क्वेश्चन है, इट इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू सस्टेन अ जेन्युइनली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड रशिया विदाउट अ सॉलिड इकोनॉमिक पिलर. डिस्कस. ठीक है. तो इंडिया रशिया के रिलेशन की बात हो रही है. विदाउट अ सॉलिड इकोनॉमिक पिलर डिफिकल्ट हो रहा है सस्टेन करना. ठीक है. तो अभी let's take this example and let's think on the spot how can we structure this, right? We can also think of it as a 20 marker, and we can also think of it as maybe as a 10 marker, 15 marker. That does not make any difference. So when I think of this question, I would initially tell some good points about India and Russia. For example, PM Modi in the BRICS summit had mentioned that wala quote, that two friends, one friend is better than two friends. That particular quote that can be mentioned, or the recent quote of PM Modi, or perhaps External Affairs Minister Mr. S. Jaishankar, highlighting the strategic depth of our partnership. Then we can tell about the various
facets. Like, for example, we have a 2+2 with them. Our defense imports are predominantly dominated by Russia. We can tell examples also of S-400, that we are also doing that despite the sanctions of CARTSA with US. That can also be mentioned. Then we can also tell, at least in the Russia's Far East, that India is now a good participant of that. So in the defense domains, and in also in some economic domains, like for example, अगर exploration है of the oil, the ONGC या ONGC Videsh Limited, all of these projects starting में we can mention. But then the question says that we need other dimensions. तो अब यहाँ पे बताओ, for example, Sergei Lavrov, he is the defense, or maybe it's like he's some minister of Russia. I'm forgetting exactly क्या title है. He had said that Quad is particularly an anti-China initiative. So this was the first time that that Russia had been very vocal of something which India was pursuing, and which can perhaps like show some of the irritants in our relationship. Then also we can mention that India's growing closeness to the West, and especially US. It also creates a wedge between our relations with Russia. So now we also need to get out of our Cold War mentality. क्योंकि अभी रशिया एंड इंडिया का जो एक मल्टीपल अलाइनमेंट है, उसमें देयर इज अ बिग रियलिटी दैट रशिया इज गेटिंग क्लोजर टू बोथ चाइना एंड पाकिस्तान, एंड इंडिया ऑल्सो ऑन इट्स फ्रंट इज गेटिंग क्लोजर टू यूएस. सो ये चीजें मेंशन करते हुए वी नीड टू मेंशन दैट वी हैव टू इंक्रीज पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स. देयर हैव टू बी बेटर एफडीआई एंड द इन्वेस्टमेंट्स. जो भी देयर आर सम न्यूक्लियर प्लांट्स एंड सम फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स व्हिच आर गोइंग ऑन, बट इंडियाज डिलीवरी इज अ प्रॉब्लम. और एक चीज हमेशा लिख सकते हो, that India promises and China delivers. Like this thing can be like mentioned again and again. Well, one can vary the way in which it is mentioned. That can be mentioned, and apart from that, we can also mention that there is a need to for a multi-dimensional engagement. So usme you can also mention few initiatives. Yeah, you can also mention maybe with the rising of maybe the growing salience of Indo-Pacific, how can India cater to its need at the strategic level while also ensuring its relationship with both US and Russia does not get any sour. So like ये सारी चीजें अगर mention करोगे properly through a good argued perspective, that is I think going to be helpful. Gaurav. परफेक्ट भैया, परफेक्ट. ठीक है. और इसमें लाइक देर इज, अभी देखो, बिकॉज तुमने पूछा है कि इफ यू वांट टू राइट इन पॉइंट फॉर्मेट या पैराग्राफ फॉर्मेट, अभी के लिए वॉट एवर फील्स नेचुरल टू यू उसमें लिखो. In my case, because I write fairly often, so I used to write it in a paragraph format. But यही सारे points, all these points, if you are able to properly articulate it in maybe a proper like point wise, तो भी हो जाएगा. क्योंकि तुम उसमें you are also mentioning the counter points. जैसे for example Quad पे anti China stand, this is a good perspective to write. And maybe some other ways in which the growing, maybe some defense deal you can mention with China, or maybe some military exercises with Pakistan. So you can mention all these points in one answer, showing that you have a lot of depth and knowledge. हाँ भैया, सही है. ठीक ठीक ठीक. तो चलो, all the best गौरव. I think अभी राजन चला गया है, and I think you should अभी all the best to you. तुम्हें कुछ और मेरे से पूछना, you can directly text me or call me. ठीक है. हाँ, ठीक. अभी तो I think other people have joined. I will speak to other people as well if they have any doubts. So, okay, hello everybody. I was initially speaking to one of, at least two of my friends who are writing mains at this point of time. So, abhi, hello Suryadeep, hello Pooja, hello Ashish, hello Shubhajit. Acha, hi Akash, I think you had messaged me to write a post for 2022 people, I think, right? Acha, if you are not able to, acha, I think I have to enable you to speak. Okay. अच्छा, मेरे साइड से कोई दिक्कत है अभी. वेट सेकंड. अच्छा आशीष, कैन यू स्पीक? तुम देखो एक बार बात करके. यस आई कैन. हाँ ठीक है. अच्छा, मुझे इंडिविजुअली सबको वो करना पड़ेगा, अनम्यूट. ओके. अच्छा कुमार, इफ यू कैन लिसन टू मी, तुम एक बार कुछ बोलो. गुड टू हैव यू हियर. हेलो. हाँ
Over. आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल साफ आ रही, बिल्कुल साफ आ रही। ठीक है। तो इफ अच्छा, तो अभी मे बी अभी लाइक आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर टारगेटिंग 2022 if I'm not wrong. Yes, So sir. if you have any specific query, you can ask me, and like nahi to I will just share some of the points for 2022 aspirants. Please share I the have points only, sir. one thing regarding the mains preparation in general. Like, as I get to know that you people have written mains, especially you also and other people also in the group who are in the chat Right. right now. So I wanted to ask one thing because I'll be writing hopefully my first mains in 2022. Yes, yes. So what I wanted to know is that how did you people manage with daily articles and the news clippets? Like for say in Hindu, we have some decent editorials and decent news topics which are directly a part of our syllabus, and we want Correct. to pick up data from that. So how did you people consolidate it? Did you write each and everything from those editorials, or you were making some e-notes out of it? That's what I wanted to know, because I am trying to do this. It is taking so much of my time. So True. that's why I wanted to have some first-hand experience. Matlab, who must have gone through this? He can Correct. write me a bit. So Shank, Like, actually the thing is, whatever articles I am sharing right now, I did not used to do it earlier. I started reading these articles specifically during my interview preparation, because this was told to me by Shubhra ma'am also, and by Kapil sir, so which helped me later on. But during my mains preparation, basically I relied on Shubhra ma'am's crash course. So at least that was fine, at least when I think of it back then. अभी आपके लिए इट इज डेफिनेटली अ चैलेंज टू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि बेसिक करंट अफेयर्स तो हो नहीं पाते हैं. सो ऑन टॉप ऑफ दैट, फॉलोइंग सो मेनी आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स, इट बिकम्स अ टीडियस टास्क. सो व्हाट यू कैन डू इज, instead of doing it daily, maybe some specific articles you can do it on a weekly basis. Just say, at least one thing which I would ask you people, because see, Harshvi Pant or C Rajmohan, at least these two are the best people to read. These people write weekly. So whenever you have any doubt related to, if you have not been able to do 1 month, 2 months, 6 months, or 1 year of PSR specific things, just go through their like profile, go through some of the articles, and you will be fine. Because anyways, I am like thinking that you are in any case going through the current affair magazine of Vision IS, at least, like if that can be a basic source for all. So that already covers the basic IR perspective. So if you want to have more depth on that, I think just going through few articles is more than enough. And even if you have not been able to do so till now, after prelims you can easily do that. That is not a big issue, because after prelims, just go through through these scholars. एक दिन में 10 15 15 like 10 to 15 articles per day one can easily read. So during the span of 1 year, there are not more than maybe 20 30 or 40 good articles. Because aapne, if you have seen my post, I have shared only, I think 12 plus 9, I think only 20 articles or so. That is for an entire year, जो मुझे बहुत अलग या अच्छे articles लगे थे. So frankly speaking, you can easily cover it. अगर daily नहीं हो पा रहा है, just don't bother with it. Post prelims, there is a lot of ground to be covered, and आराम से, like, you will be easily able to do that post prelims. okay, thanks. And one thing more regarding not only these articles regarding PSIR, but of GS in general. Say, so many things are coming in news regarding, say, hate speech and all these stuff. So if I want to make a note of these, and especially if some eminent personalities writing those articles, or the, we can say, Right. any opinion in Hindu especially. So how did you people manage to put out all in form of your notes so that you can actually utilize in means? Because one thing is that ki I just read it and just it's okay, I understood, and then let it go and wait for the magazine to come. Or did you people like really note each and everything? Means that I wanted to know regarding No. GS also, 1 to 3 also. See, for GS 1 to 3, at least for 2, I've always scored more than 100 marks. And I think यहाँ पे my friend Kukumar also, who has a very good experience with GS, and he has also given multiple interviews with me. तो अभी ऐसा है, मतलब most of the groundwork starts after prelims. While you, like, ideally you can go through some of the articles,
but that is not a compulsion कि you have to go through them always. कि for example sedition maybe you have to have very specific views, because what happens, at least in my case, I followed I think after prelims I had followed forums Dipin sir's handout for 18 and 19, which I found were useful back then. So there are different initiatives, and then there are different things which one can acquaint themselves with. The most ideal or the most Plato type way is to go through the articles, but if you're not able to do so, there are different initiatives, or then there are different ways to complete it. Abhi ke liye, I have a fair good grasp on the editorials. So if one is giving them, like abhi maine, because I was following it for more than 1 year, so I had all the articles pinned down. Same I can do also after prelims. If one needs them, I will just send you the articles or maybe the summaries of the articles, so you don't have to worry as much. Okay. Achha, one of the friends, Lucifer, has joined. Lucifer, I just wanted to ask if you are writing mains this time. If yes, I can like quickly discuss maybe 2 or 3 minutes with you, or if you are not, then fine, like it's okay. I'm not writing mains this year. Okay, no problem, because both you and I are from that PSI 2020 group. I recognize you from your name. Okay, fine. No issues. Actually, I wanted to ask one thing regarding Yes. PSIR and GS also. When you Mhm. study newspaper editorials daily, then you tend to acquire and write a lot of notes on the same topic, a lot of statistics. Correct. So I think it's useless. I mean, you need only 200 words per topic. and hardly Absolutely one correct. statistic per topic. Is it true? See, your point is fine, but the thing is, at the end of the day, for maybe 150 or 250 words, one does not need to read a lot. But that said, there are a lot of questions, especially in paper 2, which tests our understanding, and this is what I also personally felt, and also in the interviews or maybe in the mains, that if one has a basic reading habit, or like if you're following these things over a long period of time, it certainly helps you to articulate better when you write. So while I also say this is not a compulsion that one needs to do, because, and also I'm not asking anybody to make notes out of this. All you are required to do is, at max, if you find a good keyword or if you find something which is helpful, you can just do that. So there is no need to like do any other thing apart from that. Right. Thank you. Yeah, this was my major concern. Like many a times we find so many things. We just want to note it down. Ki okay, this is fine. This is fitting in that syllabus, and this article has been written really nicely. So let's make out so many points, and if it becomes really like tedious. Ki we are writing so much. It is cutting down times on prelims का static things like history पढ़ना है, geography पढ़ना है. That's why I wanted to ask कि जैसे अभी hardly 4-5 months बचे हैं, तो इसमें what would you suggest? किस तरीके से इसको किया जाए? जैसे आपने बोला कि मान लीजिए अभी जैसे हेट स्पीच का काफी चल रहा है, मॉब लिंचिंग एंड हेट स्पीच हैज बीन फॉर क्वाइट अ लॉन्ग, तो इस पे डिफरेंट एंगल से आर्टिकल्स आ रहे हैं हर दूसरे तीसरे दिन. मैं आपको बताता हूँ, देखो अभी अगर इफ देखो आपने 2 सवाल पूछे. पहली बात तो रिलेटेड टू प्रीलिम्स एंड द सेकंड इज रिलेटेड टू सम आर्टिकल्स, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट्स सेडिशन, इफ इट्स हेट स्पीच या जो भी चीजें हैं, आपको यू नीड टू नो बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स फॉर 3-4 पॉइंट्स, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट 3-4 पॉइंट्स. मे बी इफ इट इज अ केस ऑफ सेडिशन, जस्ट पता होगा एक केदारनाथ सिंह केस है, लॉ कमीशन हैज आस्क्ड टू रिव्यू / रिपील द सेडिशन लॉ, and maybe I think Justice C.V. Ramanna had also said something ki why such a colonial or something law is existing at this point of time. उन्होंने तो बोला ही है. हाँ, correct. And for maybe for hate speech, T.K. Vishwanathan committee, so just these things are good enough. You can just कि उसमें basically how are we going to argue with respect to Article 19? क्या freedom of speech है? What is the security part of it? तो बेसिकली जरा से इफ यू हैव दीज मेनी पॉइंट्स, तो वहां पे आराम से, इवन इफ इट्स अ 15 मार्कर और इट्स अ 10 मार्कर, इजीली वन कैन राइट एन आंसर, राइट? तो इट्स वो आप बस उसको देखो. अब इसमें हर एक आर्टिकल पे बहुत नुआंस्ड व्यू रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, थैंक यू यार, थैंक्स. यही कंसर्न था मेरा. ठीक है, कुंवर आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं कुछ ऐड कर दूं. हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकता हूँ. अरे बिल्कुल भाई, बिल्कुल. एंड जस्ट अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आई विल टेल यू दैट कुंवर हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड. वो तो सिर्फ प्रीलिम्स में वो नहीं निकालते CSE, ही ऑलवेज क्लियर्स फॉरेस्ट कट ऑफ एज वेल.
एंड इनका ऑप्शनल मैथ्स है, सो लाइक ही इज अ वेरी गुड कैंडिडेट इन दैट सेंस। तो बताओ कुमार। या हाँ, तो जैसे क्वेश्चन ये था कि न्यूज़पेपर कितना फॉलो करना है, कितना नहीं फॉलो करना है। तो मतलब अज्यूमिंग कि तुम प्रिपरेशन के किस स्टेज में हो, मतलब कि जो लोग 2 मेंस या 3 मेंस लिख चुके हैं, उनको पता होगा कि उनका बेसिक स्टैटिक जो पार्ट होता है वो काफी कंप्लीट होता है। तो तुम उस टाइम पे अपने नोट्स मेकिंग और न्यूज़पेपर एनालिसिस पे ज्यादा फोकस कर सकते हो, रादर देन तुम जब अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में होते हो, तुम्हें प्रीलिम्स बहुत ज्यादा कवर करना है, तुम्हें ऑप्शनल कवर करना है काफी। तो उस टाइम पे आउटसोर्स करने की चीजें मतलब कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो डेवलपिंग होते हैं, उनको पूरे तुम 3 महीने 4 महीने फॉलो नहीं कर सकते। तो एक ये चीज ध्यान रखनी होती है मतलब नोट्स बनाने में। तुम मतलब एक एक चीज ये ट्राई कर सकते हो कि दिस दिस इशू हैज बीन इन न्यूज, उसके बाद 4 महीने बाद उसमें देखो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इशू को सॉल्व करने की कोशिश, मतलब इशू पे बेस्ड हर दिन पढ़ने की जरूरत नहीं है उसे, क्योंकि समझ गए। मोरलेस जब वो टॉपिक न्यूज में होगा, रिपीटिशन बहुत ज्यादा होता है उनमें, तो हर जी चीज जी तुम जी। यही नहीं चीज मुझे नोट कर बहुत डर सकते। कर रही थी कि जैसे एक टॉपिक है, पता चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ अलग अलग हो रहा है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते जा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंट्स आर ऑकरिंग ओवर द डे, फिर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस के एडिटोरियल आ रहे हैं और सब में ही रेलिवेंट पॉइंट्स हैं। तो मेरे को इतनी प्रॉब्लम मेरे मन में नहीं आता कि मैं ये भी नोट कर लूं वो भी नोट कर लूं। हाँ हाँ, तो दैट मैं इज समझ मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। पर जी जी फॉर जी एग्जांपल जैसे हम लोग अभी हेट स्पीच का एग्जांपल लेते हैं, तो वहां पे मोस्टली जो भी तुम आर्टिकल जो भी लास्ट के 5-10 दिन में देखोगे, जी तो जी। मोस्टली आर्टिकल्स जो बॉयल डाउन होते हैं, तो वो यही बोल रहे हैं कि हेट स्पीच डिफाइंड नहीं है, या जो कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट्स हैं बिल्कुल उसको उसको भी मतलब कि जजमेंट्स में ही बहुत एम्बिगिटी है। तो इन बिल्कुल। नुआंसेस को देखने की कोशिश करो कि ये मेन इशू ये होंगे मेरे, जिन पे मैं वर्क मतलब जिनको मुझे नोट करना है। हर दिन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि मोरलेस घुमा फिरा के बात सेम ही लिखी जा रही है, तो सेम आर्टिकल्स 153 295 ये मेंशन हो रहा है। तो बिल्कुल। इतना नोट कर लो, और जब कुछ मेजर हो इसमें चेंज, जी तब जी। उसको फॉलो करना। मतलब 3-4 महीने के बाद जब भी कंक्लूजन की तरफ जाने लगता है ना कोई भी टॉपिक, तब बिल्कुल बिल्कुल। तब इस पे फोकस करना, तब नोट्स बनाना, क्योंकि तुम्हें हर बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा ये मतलब मैं ऐसे मानता हूँ। मैं बिल्कुल यही चीज पूछना ही चाह रहा था, और मैं इसी चीज को लेके बॉदर ही था कि कोई हम्म, अगर ऑलरेडी इस प्रोसेस से निकला हो, ओनली ही वुड बी एबल टू गाइड मी वेल, हाँ बिकॉज हाँ दिस वाज हैपनिंग। मतलब देखिए, दो तरह के लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते, हमको बस विजन पढ़वा लो और मतलब बाद में पढ़ लेंगे, वी कैन डू। मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। मतलब मुझको हाँ कोई कह दे कि तुम पुराना न्यूज जाके एकदम से पढ़ लो विदाउट, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग इट डेली थोड़ा थोड़ा, तो मेरे को हाँ एकदम से पीछे का पढ़ने में मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता। तो मेरे लिए हाँ जरूरी हो जाता है कि मैं न्यूज़पेपर पे रोज एक बार नजर मारूं ही मारूं। हाँ हाँ मतलब हाँ मैं, हाँ, तो मैं नहीं मारूंगा तो मुझको समझ में ही नहीं आता, और फिर मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार इसमें ये दिस थिंग इज नोट वर्दी, नोट करते चले जाओ। लेकिन मैं वही हाँ सोच रहा था, इसका एक मिडिल पाथ निकालें जैसा आप बता रहे हैं, बताइएगा यही करना सही रहेगा ना, क्योंकि फिल्म्स के लिए भी मुझे देखना है, क्योंकि बहुत कम ही हाँ, टाइम बचा है, 4-5 महीना। वही मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर तुम प्रीलिम्स के लिए वरी कर रहे हो तो इसको आउटसोर्स कर सकते हो, मतलब कि जैसे हम लोग जब इनिशियल अटेम्प्ट्स में थे तो हम लोग यही करते थे कि अब ठीक है ठीक हेट है। स्पीच हम सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते। हाँ, पर वी यूज टू कीप ट्रैक रिकॉर्ड कि हाँ ये मैं चीजें समझ हो गया, रही हैं, बिल्कुल ताकि एटलीस्ट बिल्कुल। कुछ मिस ना हो जाए। तो मैं वो बस रखो। टॉपिक नोट कर लूं, और कुछ अगर हाँ मान लीजिए कैसी चीज लगी तो उसको नोट कर लूं, और बाकी फिर हाँ देख लूंगा कि हाँ, जब बाकी देंगे। हाँ जब वो कंक्लूड होगा, क्योंकि 2 महीने बाद देखोगे दिस सेम टॉपिक्स विल बी इन विजन आईएएस मैगजीन या फोरम आईएएस मैगजीन, किसी के में होगा, वही ठीक है। चीज है, वही तो चीज है, वही चीज है, उसमें मुझे यही देखो लग कि रहा था। हाँ ओवरऑल ओवरऑल ने जो बना के दिया है मटेरियल, वेदर इट्स मतलब इट इज केपेबल है सफाइस। मेरी नीड्स को केटर करने के लिए या नहीं। अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि इन जनरल वो बना के दे ही रहे हैं ना तुम्हें इतना अच्छा मटेरियल, तो हर चीज तुम्हें नहीं करनी है, थोड़ा बस बस आउटसोर्स करो, फ्री में चीज ये टाइम हो दो। जाती थी कि वो लोग 1 महीने बाद देते हैं, तो वही हाँ मुझे लग रहा था कि खाली मैं उस पर सीधा डिपेंड नहीं हो सकता। हाँ तो फिर मुझे हाँ लगता था कि नोट करता हाँ, चलूं, मतलब नोट वही करता है चलूं। जैसे अभी कुंवर बोल रहे हैं आपसे, तो आप लाइक यू कैन मतलब कुछ आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, और ऑल्दो जैसे वो लोग समराइज बहुत अच्छा करते हैं, उतना अच्छा हम लोग समराइज कर ही नहीं सकते, बिकॉज दे ऑल्सो रीड 10-15 आर्टिकल्स ऑन द सेम थिंग। वो आप कर लो, पर हाँ आपकी अगर बेसिक रीडिंग हैबिट है, और आप अब देखो अगर आप पॉल साइंस वाले स्टूडेंट हो, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग पॉल साइंस वाले स्टूडेंट है, डू एक बार पेपर बहुत अच्छे से देखना एटलीस्ट ऑन संडे,
क्योंकि उसमें इतने ऐसे टॉपिक्स आएंगे विच विजन वुड हैव नॉट कवर्ड, आपने भी देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे, बट दे वुड हैव आस्क्ड वेरी नुआंस्ड क्वेश्चंस। तो पेपर अगर पढ़ रहे हो, और स्पेशली जो हमारा ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल है, तो एडिटोरियल्स उस रिगार्ड में भी आप पढ़ सकते हो, जस्ट टू मेक श्योर वो टाइप के क्वेश्चंस पे यू हैव एटलीस्ट सम कंटेंट। जैसे अगर इनकेस शैंक अगर आपको ऑप्शनल पॉल साइंस हो तो हाँ सर, अच्छा, आपको ऑप्शनल कौन सा है? पॉल साइंस है ना? हाँ भाई हाँ। तो आपने अगर जैसे पिछले साल का पेपर देखा हो, उसमें कुछ क्वेश्चन थे। जैसे एक क्वेश्चन आया था इंडिया जापान पे, डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन पूछा था एक्विजिशन क्रॉस सर्विस अग्रीमेंट पे 15 या 20 नंबर का। बिल्कुल बिल्कुल। आप विजन की मैगजीन उस महीने की उठा लेना, 2 से 3 लाइन दी थी उसमें, या फिर कहीं भी पढ़ोगे कुछ नहीं आया था। पर जिसने बिल्कुल। एडिटोरियल पढ़ा होगा उसमें उन्होंने प्रॉपरली बताया था कि इतनी डेप्थ में, क्योंकि वो आई थिंक अगस्त एंड या सितंबर के आसपास में वो अग्रीमेंट हुआ है, और आई थिंक उसके थोड़े दिनों बाद में ही मेंस था। तो वो ऐसे सवाल जिसने अगर वो पढ़ा होगा तो उसके लिए आसान होगा, राइट? तो दैट वुड बी यूजफुल फॉर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बाकी हेट स्पीच और इस तरह के सवाल, पहली बात, अगर 1B में आएंगे या इन जनरल नॉर्मल जीएस में आएंगे, जस्ट एक बेसिक आर्गुमेंट रखो आप दिमाग में, ठीक है ये बात करनी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ये हैं, ये सारी चीजें, ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ गए। ये इतना वैसा सवाल, ये ऐसा मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि ये हर साल बी 2016, 20, 25 ये इसी तरह से इस पर डिबेट्स होनी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन है अच्छा, एक सेकंड यार एक सेकंड, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो हैज जॉइंड, तरुण। तो तरुण इज आल्सो राइटिंग मेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट, तरुण। हाँ, एक सेकंड, आई एम जस्ट अलाउइंग यू टू स्पीक। हाँ, तरुण अभी बोलो इफ यू। हाँ, I just wanted to thanks यार, बस I just joined in. Continue. अच्छा, यू जस्ट जॉइंड इन। तो अभी इससे पहले यार तरुण, वही लास्ट मोमेंट वाली बात हो रही थी, तो मे बी दैट तुम्हें तो ऑलरेडी पता ही है, आई थिंक तुम यू हैव ऑलरेडी रिटन मेंस विद पॉल साइंस एंड गिवन इंटरव्यूज सो मेनी टाइम्स। तो अभी आई थिंक लास्ट मोमेंट के लिए मैंने कुछ आर्टिकल शेयर करें, इफ यू फाइंड देम यूजफुल तुम देख सकते हो। बाकी पेपर 1 के लिए वही मेरी पुरानी टिप्स है जो मैं तुम्हें पहले फोन पे बताता रहता हूँ, टू गेट If लाइक you, वेरी गुड मार्क्स। I would be willing to listen. अच्छा, ठीक है, मैं बिकॉज यू हैव ज्वाइंड एंड लाइक अभी मैं एक बार फिर से रिपीट कर ही देता हूँ एटलीस्ट पेपर 1 के लिए, बिकॉज एटलीस्ट दैट हेल्प मी मे बी गेट 162 मार्क्स। अच्छा, मैं एक काम तरुण ये भी करूंगा, अभी सेशन के बाद मैं एक अपने, अभी मैंने कुछ मे बी महीने पहले कुछ आंसर्स लिखे थे पेपर 1 के ही, तो आई जस्ट शेयर देम, मे बी यू कैन क्विकली गो थ्रू देम। अगर आई थिंक ज्यादा नहीं, 8 क्वेश्चन है, बट दोज आर फ्रॉम डिफरेंट टॉपिक्स। तो पेपर 1 के लिए लाइक माय स्ट्रेटजी वाज दैट आई अटेम्प्टेड स्टार्टिंग एट 10 मार्कर्स बहुत अच्छे तरह से, विच मेंट आई रोट मोर देन 150 or maybe 170, 180, 190 वर्ड्स स्टार्टिंग के 10 मार्कर्स में। एंड मैंने अच्छे से सारे पॉइंट्स मेंशन करे थे। आई गेव क्रिटिसिज्म फॉर ऑल द क्वेश्चंस, कंक्लूजन्स, इंट्रो, बॉडी, सब कुछ बहुत अच्छा लिखा था। और ये चीज शुभ्रा मैम ने उस समय, शी हैड टोल्ड अस कि स्टार्टिंग के जो 10 मार्कर्स होते हैं, राइट इट इतने अच्छे से लिखो सो दैट एक एग्जामिनर दैट देयर इज अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन यू कि आपने बहुत अच्छे से लिखा हुआ। दैट इज वन थिंग। उसके बाद फिर 20 मार्कर्स एंड 15 मार्कर्स, और सबसे लास्ट में 10 मार्कर्स में करता था सेक्शन बी के। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि बहुत क्वेश्चन है, जैसे आजकल पेपर 1 में ओपन एंडेड सवाल आते हैं, दे विल जस्ट मेंशन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डॉट खत्म, या राइट टू प्रॉपर्टी या कुछ इस तरह का क्वेश्चन दे देंगे, उसमें कुछ भी नहीं मेंशन्ड है। सो यू हैव टू थिंक कि वेदर आई शुड स्टार्ट फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव या लिबरल पर्सपेक्टिव से शुरू करना है, मार्क्सिस्ट डालना है, ये डालना है। तो मेरे हिसाब से द बेस्ट स्ट्रैटेजी इज आप जितना ज्यादा वाइड लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, आई स्टार्टेड बेसिकली जस्टिस को डिफाइन करते हुए, देन आई स्टार्टेड विद द ग्रीक कॉन्सेप्शन विच इज एरिस्टोटल्स व्यू ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। Then I also had the classical liberal view को क्रिटिसाइज किया मार्क्सिस्ट व्यू के साथ। मार्क्सिस्ट व्यू के बाद सोशल लिबरल्स को मैंने बताया, एंड देन फाइनली व्हेन रिकंसाइल्ड इट विद द रॉल्सियन पर्सपेक्टिव और रॉल्सियन नॉजिक, ये सारा बताते हुए, तो इन दैट 10 मार्कर आई ट्राई टू गिव एज मेनी डायमेंशंस एज पॉसिबल इन दैट आंसर। ठीक, सो दैट हेल्प मी। एंड सिमिलर चीजें मैंने करी थी। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, लाइक आप, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ अच्छे से। लाइक फॉर एग्जांपल इन 2018 देयर वाज अ क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेस्ट एंड तूतीकोरिन, वो आई थिंक आई बेयरली रोट अ सिंगल पेज ऑन इट। ठीक, उसमें, और इनफैक्ट उसमें एक दो और क्वेश्चंस थोड़े टिपिकल थे, एटलीस्ट पेपर सेक्शन बी में।
इंडियन वाले पार्ट में, विच आई वॉज नॉट एबल टू अटेम्प्ट दैट वेल. बट डिस्पाइट दैट, क्योंकि मैंने बाकी चीजें बहुत अच्छे से मेंशन करी थी, सारे प्रॉपरली सब कुछ लिखा हुआ था, सो आई स्टिल एंडेड अप गेटिंग वेरी गुड मार्क्स. सो ये चीज वही है कि कोशिश करनी है पहली बात तो, अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस हो पाए, एंड जो क्वेश्चंस हमें अच्छे से आते हैं, जस्ट ट्राई टू मेक श्योर दैट उसमें वॉट एवर यू नो, क्रिटिसिजम्स अगर दे रहे हो स्पेसिफिक दो, बहुत अच्छा है. स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म नहीं आती है तो जेनरिक क्रिटिसिज्म दे दो. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को मार्क्स की क्रिटिसिज्म पता है, लाइक मार्क्स को वेबर कॉल्स हिम एज इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म एंड सो ऑन. बट ग्रामसी के केस में वी डोंट नो द स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म ऑफ ग्रामसी, राइट? पर ग्रामसी को अगर क्रिटिसाइज करना हो तो जस्ट क्रिटिसाइज जैसे आप किसी भी मार्क्सिस्ट को क्रिटिसाइज करोगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर क्रिटिसाइजिंग ग्रामसी, जस्ट मेंशन that because like any other Marxist, there is an over reliance on the economic factors, right? या फिर the way जो भी उनका hegemony या ideology पे जो view है, that is not very concrete, या that is not applicable for all the sections, या इस तरह से, which is a very generic criticism. But just because one has mentioned the criticism, तो एक fair आपको, if you are getting maybe 5 marks out of 15, तो 5.5 मिलेंगे in general. Because this is what I have learned through maybe Shubhra ma'am or maybe Piyush Chaubey sir, कि जो जो चीजें हैं सेक्शंस में आंसर करना है. एंड मे बी, और फिर रही बात या तरुण पेपर 2 के लिए, तो समथिंग विच हेल्प मी इन 2019 वाज सिंपली दैट कि मैंने स्कॉलर्स बहुत ज्यादा नहीं लिखे थे, पर मेरे आर्ग्यूमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन अभी भी क्वाड पे आएगा या आसियान पे आएगा, या फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज द न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ यूएस अंडर बाइडेन एंड हाउ आर वी गोइंग टू टैकल चाइना, सपोज ये क्वेश्चन आ जाए एकदम से, अनहर्ड है, क्योंकि बाइडेन की कोई ऐसी स्पेसिफिक डॉक्ट्राइन है ही नहीं, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मेरे आर्ग्यूमेंट होंगे एकदम हर चीज को. आई विल स्टार्ट फ्रॉम देन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. आई विल मेंशन कि भाई यूएस के क्या एक तरह से एम्बिशंस हैं, एंड हाउ इज चाइना मिडिल किंगडम. देन आई विल गो थ्रू मिलिट्री, डिफेंस, इकोनॉमिक, या जो बेसिक जो चीज है. देन आई विल गो थ्रू इंडो पैसिफिक को, कोशिश करो इंडो पैसिफिक, चाइना, ये सबको एक अलग डायमेंशन में एड्रेस करना हर क्वेश्चन में, बिकॉज इंडो पैसिफिक इज अ न्यू थिएटर ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स. सिमिलरली इज द केस विद चाइना, कि चाइना वाला एंगल किसी क्वेश्चन में दिया हो, एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हो, चाइना वी कैन ब्रिंग इट अप फॉर आवर एनालिसिस. सेम इज द केस दैट इफ वी वांट टू आंसर ऑफ एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मे बी ग्लोबल, जो भी ग्लोबल या ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे है, तो उसमें रीजनल एंगल ले आओ. और अगर रीजनल ला रहे हैं तो मे बी वी कैन ब्रिंग इन अफगानिस्तान. तो ये सारी चीजों से अपनी जो एनालिसिस है वो बेटर हो जाएगी. हाँ, बाकी बाइडेन वाले केस में वी कैन मेंशन कि बाइडेन पूरी तरह से ट्रंप को, लाइक ही इज नॉट पूरी तरह से, एटलीस्ट इन हिज डीलिंग विद चाइना, ही इज नॉट एक्सप्लिसिटली रिमूविंग ऑल दोस थिंग्स. वो कहीं कहीं पे मैक्सिमम प्रेशर भी लगा रहा है, बट फ्रॉम अ लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव ही इज ऑल्सो मेकिंग श्योर कि पेरिस क्लाइमेट डील या एटलीस्ट द ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो टेकन केयर ऑफ. और उसमें वी कैन ऑल्सो मेंशन उनका इंडो पैसिफिक, बट उसमें ऑल्सो मेंशन द ऑकस एंगल, कि दे आर विलिंग टू साइडलाइन एन एलाई लाइक फ्रांस, which can possibly affect the US-EU deal. So at the end of the day, the global interest of US are the highest. उसको मतलब US acts only on the basis of its national interest, which is true regardless of the person in power. Because अगर वो क्वेश्चन में पूछेगा ना बाइडेन की क्या डॉक्ट्राइन है, तो our analysis should not be limited to Biden, क्योंकि US ultimately it's about US. तो US में फॉरेन पॉलिसी और ये ना इसका बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है सीन. तो वी शुड नॉट फॉल इनटू द ट्रैप कि भाई बाइडेन बहुत अच्छा आदमी है, बाइडेन ये कर देगा, लाइक बाइडेन विल डू दिस दैट. तो इन दैट सेंस वी कैन ट्राई टू आंसर इट. बाकी तो तरुण, आई थिंक ऑल द बेस्ट टू यू. और कुछ अगर कुछ स्पेसिफिक हो तो मेरे को अलग से भी भेज सकते हो मैसेज, बट आई थिंक अभी एक दिन बचा है, तो आई डोंट वांट, मतलब आई थिंक ऑलमोस्ट सब देख ही लिया होगा तुमने. Sir, if you can tell like how to end an answer, like should it be on criticism or some kind of a Question general बताओ. sentence? Something like जैसे कि Machiavelli secularism maybe, or some kind of in a 10 marker, like how to end it. देखो 10 मार्कर में मेरी बेसिक अप्रोच रहती है, आई नेवर एंड इट ऑन अ क्रिटिसिज्म. जैसे क्योंकि ये दिस आई लर्न फ्रॉम द एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी लिखते हैं उसमें एटलीस्ट जो कंपैरेटिव वाली थी, जिसमें कंपैरेटिव मेंशन्ड है, तो वो क्या करेंगे, मैकियावेली की सेक्युलरिज्म है या है, तो पहली बात तो
हम बॉडी बता देंगे, बॉडी के बाद वी विल हैव अ गुड क्रिटिसिज्म, लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन मेंशन Gandhi's criticism of Machiavelli, that separating religion from politics, something like that. Then we can also draw a parallel maybe with Arthashastra. And finally जब हम बात करेंगे तो we will talk in a broad sense कि Machiavelli, his impact on real politics, या he was an inspiration for maybe the realists and the military strategic thinkers, and overall the separation of state from religion heralded a new space for the political science as a discipline. क्योंकि वहां पे हम क्रिटिसिज्म पे एंड नहीं करेंगे मैकियावेली की, या कोई भी हो, मतलब अगर एग्जांपल किसी भी चीज का है तो वी विल ट्राई टू, हम कितना, मतलब है ना, आप ये सोचो कि मतलब उस पर्सन ने या उस थ्योरी या उस आइडियोलॉजी ने हाउ डिड इट क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट ओवरऑल, तो उस पे एंड करेंगे, विच ऑल्सो शोज टू द एग्जामिनर की आवर एनालिसिस इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू a small point, but we can cover a lot of like breadth and depth. Okay. And if you can talk about the structure wala thing in an answer, like how do you go about? स्ट्रक्चर में यार कोई मेरे को कोई क्वेश्चन बोलो, मतलब स्ट्रक्चर, मतलब आई कैन लाइक अभी स्ट्रक्चर कर सकते हैं ऑन द स्पॉट. Okay, just a second. For example, there is a question on decline on political theory. ठीक है, So how would you इस answer 10 marker? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, और ये तो आई थिंक 18 में भी आया इस तरह का और 19 में भी आया. तो हम लोग बेसिकली तो पॉलिटिकल थ्योरी को स्टार्टिंग में आप डिफाइन कर दो, एंड डिक्लाइन जब हम बताएंगे तो वी विल मेंशन दैट देयर हैव बीन डिक्लाइन एटलीस्ट ऑन टू फ्रंट्स एट टू लेवल्स. पहला हुआ कि जब द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी विच वाज लाइक जिसमें आपकी लीगल इंस्टीट्यूशनलिस्ट अप्रोच और बाकी जो अप्रोचेस थी, उसमें उनके स्कॉलर्स के साथ मेंशन करते हुए विच डिक्लाइंड बिकॉज इट वाज नॉट केटरिंग टू द नीड्स एंड देयर वाज अ नीड ऑफ a verifiable scientific systematic approach. वहां पे we can bring in डेविड ईस्टन, एंड वहां पे एक स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म है मैक्राइडिस की, प्रॉपर एक पूरी लंबी लाइन है जिसमें आई थिंक सारे वैल्यू बेस्ड फैक्ट डाइकोटमी ये वो पूरी लाइन आप लिख सकते हो. बट देन ऑल्सो वी कैन मेंशन हाउ द, मतलब जब बिहेवियरल अप्रोच आई, हाउ इन इट्स ओवर रिलायंस on the scientific aspect it also led to the decline of the theory, because political science is not pure science. फिर वहां पे फिर फाइनली आप लाओ कंक्लूड इसमें कैसे कर पाओगे, जैसे एक तो सिंथेसिस एंटीथेसिस एक वाला पॉइंट है, पर दूसरी चीज हम इसमें वी कैन ऑल्सो हाईलाइट हाउ द फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी वाज रिजॉल्व्ड बाय द इमर्जेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरल अप्रोच. तो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी पे खत्म नहीं होगा, वी कैन वेरी वेल मेंशन एंड में रिवाइवल ऑफ अ नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी मे बी थ्रू रॉल्स, या फिर सिंपली लिख दो कि द फैक्ट वैल्यू डाइकोटमी वाज एंडेड बाय द इमर्जेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, दैट्स इट. तो इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया. हमने कुछ स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म में भी जो लास्टलेट या लास्टवेल ने बताया था, हाउ डिड पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन, ये सारी चीजें. तो अगर हम इतनी चीजें अगर इफ यू आर एबल टू मेंशन इन अ 10 मार्कर, इससे ज्यादा आपका कॉम्पिटिटर लिखेगा ही नहीं. Right now the questions are coming very wide. Like they हाँ, are asking ट्रू. even in a 10 marker. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही. आप मतलब वही ना, देखो अभी बिकॉज यू हैव अ वेरी वेरी गुड कमांड ऑन थ्योरी, तो कोशिश करो आप कितने डायमेंशंस का कवर कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन राइट टू प्रॉपर्टी पे आता है, एंड इफ योर एनालिसिस इज लिमिटेड मे बी टू जॉन लॉक या एक दो और मार्क्सिस्ट, तो उसमें हो सकता है इफ समबडी इज आल्सो मेंशनिंग राइट टू प्रॉपर्टी पे व्हाट वाज द व्यू ऑफ प्लेटो, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स, then how has property as a feudal element been in the medieval times, which was then criticized by क्या बोलते हैं liberals like John Locke, and then the Marxist view, and then finally एक view. तो इतने views आप in a 10 marker बता रहे हो, तो you will certainly get very good marks in that. और इसको जब 10 मार्कर लिखोगे तो कोशिश करना एकदम मत लिखो, थोड़ा सा लाइक टेक एटलीस्ट 30 सेकेंड्स और मे बी 60 सेकेंड्स टू योरसेल्फ, दिमाग में स्ट्रक्चर कर लो, एंड व्हेन यू विल बी एबल टू डू दैट बहुत बहुत अच्छा आंसर लिख लोगे. Then another thing is in that case then I will be breaching the word limit. तो कोई बात नहीं. यार मैंने तो करी है ना, मैंने बोला तो है, मैंने तो बहुत दबा की वो करी थी 10 मार्कर्स के लिए. मैंने वर्ड लिमिट क्रॉस करके भी. हाँ, और मैंने सिर्फ 10 मार्कर्स के लिए किया था बाय द वे, जस्ट मतलब, और ये दिस वाज नॉट डेलिबरेट. हुआ क्या था, मैं इतना एक्साइटेड था, सारे क्वेश्चन सुने हुए थे, अच्छा लग रहा था, तो फॉर 10 मार्कर्स मैंने लिखे. एंड अच्छा हाँ, एक और चीज वो आई शुड आल्सो मेंशन इट हियर, जस्ट अ सेकंड. अरे रुक क्यों गया. हाँ,
हाँ, अभी देखो एक चीज, जस्ट मेक श्योर कि यू आर गिविंग 35 मिनट्स पर क्वेश्चन, विच मीन्स 175 मिनट्स, 5 मिनट बचेंगे फॉर सम राइटिंग हियर एंड देयर। बट फॉर द फर्स्ट जो पहले 10 मार्कर्स हैं उसमें वो ऊपर नीचे हो सकता है, बिकॉज दैट इज योर मार्केटिंग, तुम्हारी मार्केटिंग टेक्निक है। सो यू आर ओनली टेलिंग द एग्जामिनर कि मैं जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ आई आंसर इट वेरी होलिस्टिकली। एंड इनफैक्ट अभी जैसे आई वाज आल्सो इवैल्यूएटिंग फ्यू कॉपीज फ्रॉम शुभ्रा मैम एंड ओनली आईएएस, तो कुछ कुछ बच्चे जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी तरह से वो करते हैं ना, लाइक मेंशन सारी चीजें, तो उसमें मैं हूं ये एग्जामिनर है, आई एम मोर इंक्लाइंड टू गिव देम मार्क्स इवन इफ सेक्शन बी या बाकी जगह पे इफ दे आर नॉट राइटिंग एज वेल। तो ये बहुत वैसा टाइप का है, मतलब इट रियली प्लेस विद योर माइंड। तो तुम वर्ड लिमिट का एटलीस्ट जिन क्वेश्चंस पे तुम जानते हो उसमें तुम अच्छे से लिखो, क्योंकि वहां पे देर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ, जैसे कोचिंग में इन सब में तुम्हें 10 में 5 देते हैं, पर वहां कोई लिमिट नहीं है भाई। मतलब इफ दे गेव मी 162 मार्क्स पेपर 1 में, इमेजिन मेरे को कितने क्वेश्चंस पे उसने 20 में 12 13 नंबर दिए होंगे, या इवन मोर देन दैट, बिकॉज आई हैड एटलीस्ट 20-25 मार्क्स का मैंने अच्छे से अटेम्प्ट करा ही नहीं था उस पेपर में। तो राइट जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दबा के खेलना, मतलब जो आते हैं, मतलब सो दैट यू डोंट हैव द रिग्रेट कि यार वो मेरे को उसमें वो पॉइंट आता था, ये नहीं आता था। मैं तुम्हें बताऊं, यूपी वाले में जब मैंने मेंस यूपी वाले में लिखा था तो उसमें रोल्स पे क्वेश्चन आया था, एंड उसमें भी आई गॉट वेरी गुड मार्क्स ओवरऑल। आई थिंक आई गॉट अराउंड 240 समथिंग मार्क्स आउट ऑफ 400। एंड यूपी में अगर इतने में आप मार्क्स ला रहे हो, दैट इज मोर देन, लाइक दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। बट उसमें क्या हुआ था, रोल्स में मैं क्रिटिसिज्म लिखने वाला था, मैंने उसके लिए स्पेस छोड़ा, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, एंड फाइनली आई वाज नॉट एबल टू राइट। And I think out of 200 they gave me around 120-125 marks, which is decent. बट अब मुझे हमेशा लगता है, हैड आई, मैंने अगर उसको लिखा होता तो मे बी मेरे को शायद 2-3 नंबर एक्स्ट्रा मिल गए होते। राइट तो So या everything was written in points in a 10 marker or a para, मतलब सब कुछ नहीं, पैरा में मैंने था। यार पैरा में लिखा था। मैं अभी लाइक आफ्टर दिस कॉल आई विल शेयर माय कॉपी एज वेल। एक आई थिंक अभी Okay, मैंने, आई थिंक मे बी जून या जुलाई में कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, दिस इज रिलेटेड टू दैट, okay. तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। आई ऑलवेज राइट इन लाइक पॉइंट्स, सॉरी इन पैराग्राफ, पर आई एम सेइंग कि अगर पॉइंट्स में भी लिख रहे हो, इफ इट मेक्स सेंस स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली, सो दैट इज नॉट एन इशू। Okay. सर मेरे को प्रीलिम्स का डाउट एक बार पूछ लूं? एक सेकंड, कौन बोल रहा था यार? लूसीफर। अच्छा, हाँ पूछो। अच्छा तो फिर यार तरुण, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम यू आई डोंट थिंक अभी कोई और है जो लिख रहा है। अगर तुमको डायरेक्ट कोई डाउट हो तो डायरेक्टली मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? आई विल हाँ हाँ कॉल श्योर यू यार और चलो ठीक है I would be leaving ठीक then है। यार ठीक है ऑल द बेस्ट फ्रॉम हाँ ऑल ऑफ हाँ अस। थैंक्स यार ओके बाय ऑल द बेस्ट, फॉर द बेस्ट। ठीक ठीक। हेलो हाँ हाँ, सर, अभी पूछो यार, अभी जिसको और कोई डाउट था। मैंने एक्चुअली लास्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एंड इवन दो मेरे मेंस के मॉक्स में मार्क्स अच्छे आते हैं, काफी अच्छे आते हैं, पर समहाउ मेरे प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। इफ यू कैन हेल्प मी, क्योंकि आई डोंट थिंक नॉलेज में प्रॉब्लम है, बट जस्ट हाउ टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू अप्रोच द एक तो पेपर। आपका डाउट हो गया, अभी मैं और जस्ट आई जस्ट टेक जस्ट अ स्मॉल पोल जस्ट टू आंसर। अच्छा आशीष, आपको कोई डाउट है और? नॉट वेरी स्पेसिफिक, जो बाकी ठीक लोग ठीक पूछ हाँ ठीक ठीक ठीक, ओके ओके। प्रणेश, आई हैव नॉट हर्ड यू स्पीक, डू यू हैव एनी डाउट? Sir, actually, I'm preparing for 2022. I gave my last attempt. The previous attempt I've tried, but I don't have any clue how I couldn't make it. And राइट, my main doubt is like, sir, I haven't tried any specific answer writing for my optional, that is PSIR. And I'm right ओके now following Piyush Chobesar's lectures. ओके And it's like I believe I'm in good touch with the subject, but I haven't started yet my answer writing practice. And since Chaube sir is not available for any offline support, and whatever I'm going to make use of him, it will be through online. So it is like he'll be giving me a question, I have to write, and I have to upload my copy, and then I'll be getting a review. And there are right, more but there students, are around 4 other students. initiatives as well, like there is, I think, IAS network, there is Convert IAS. Even if you don't join Shubhra ma'am or only IAS, but then there are other initiatives which you can think of, maybe. That's totally up to you. Okay, sir. And sir, And my by other the way, doubt, if you have any specific doubt related to answer writing, you can always like personal message me on Telegram, right? I am with the ID sure. Antifragile or Maxomnia. Mm-hmm.
Okay, sir, I'll do that. And one more thing, it's like, sir, Yeah. is it advisable to start answer writing aggressively at this point of time? Because we may be expecting a notification anytime in the mid of February, right? Right. See, because if you have, like, I think if you're fairly well prepared for your prelims, you can devote some time to answer writing, especially because you've already covered the basic ground of Paul science. So maybe for 15 days, 20 days, 25 days, totally depends on you, because there are people and there are friends. I think maybe if Kumar is going to write this year, I think he will at least let maybe till March. That's because he is very solid in his prelims. But that is not true for everybody. For in your case, you can find, like, follow a middle path wherein you can maybe write for 20 days, 30 days. You can select the topics which you want to write, or maybe you can write the previous year questions. Like, my best advice to anybody is go through this year's, like, the paper which is going to happen on Sunday. Do that, like at least, even if you don't write the answers, make some points on it, so that you are very well, like, you know the topics. And even if you don't know the topics, you can maybe ask me, and then I will also have a discussion with a few friends of mine who already are maybe selected or who have given mains this year. So in that sense, you will be very well informed. Okay, sir. Thank you so much. I'll let Yeah, you yeah. know. Sure. Acha, Yogesh, Priya, Harshita, Akash, if there is any specific doubt, if you wanted to ask, then I'll close with the prelims doubt of Lucifer. Good evening, sir. Sir, if you elaborate on this prelims only, then it will be very helpful. ठीक है. Prelims अभी हम, like, I will speak on prelims. और कोई is there any specific doubt of anybody who wants to, like, because ये live stream I'm doing it for the first time, so I just want that it's a good experience for all of you. जिसका कोई भी डाउट हो, कोई डाउट लेके मत जाना वापस. सर मुझे पूछना था. हाँ बोलो प्लीज. हाँ सर, वो मैं PSR का मैं शुभ्रा मैम के नोट्स लिए थे मैंने मार्केट से, तो उससे कर रहा था मैं. तो मैंने एक दो बार, मतलब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट तो 2 बार से ज्यादा पढ़ लिया है, और बाकी जो पेपर टू और पेपर 1 का सेक्शन भी वो एक बार तो पढ़ चुका हूँ मैं. तो मैंने आंसर राइटिंग भी ट्राई किया था, लेकिन फिर अभी 3-4 महीने से मैंने उसको कुछ देखा ही नहीं. तो अभी वो आंसर जो मैंने लिखे थे पहले 3-4 महीने, अगस्त में लिखा था मैंने आंसर, तो वो आंसर देखने के बाद मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे लिख दिया. तो वो ठीक है. हाँ, और एक इशू था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए. वो जो अभी मैम के जो इतने 8-9 बुकलेट्स है, उसमें 7 या 8 बुकलेट्स है, तो उनके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए और वो रिवीजन के लिए कैसे करें. मैंने आपसे वहां पे भी पूछा था, आपने एक पोस्ट डाला था ना कि 2022 के लिए नेक्स्ट 1 मंथ में क्या कर सकते हैं अभी इसमें ऑप्शनल थोड़ा प्रिपेयर करना हो तो. ओके ठीक है. आई गेट योर पॉइंट. अच्छा, Sakshi has also joined in. Sakshi, do you have any specific doubt which you want me to answer, or just like, if you just want to listen through to everybody else, because I think most of the people have already asked their doubts. Sir, hello. Sir, basically I want to ask a question that I have started my optional few days back only, and I have to give 2020 attempts. So I'm like very much confused and in a bit kind of pressure, like how to prepare it wisely. Like I'm not able to basically done the things well, and I'm also not able to like do the answer writing portion. Like how should I start? Okay. Fine. So if you're targeting 2022, and I will also answer Akash's question with this. You have to, because if you're targeting this year only, so please make sure that you study at least 10 to 12 hours per day. Why? Because you also have to cover your optional properly. You also have to manage GS. You have to ensure that you clear your prelims, so that all of your preparation at least is in the right direction. That said, there are a lot of people who start their optional after prelims from the very scratch. They clear it, they get a good rank. Why does that happen? Because they are good with the fundamentals of GS. Because let me tell you, in PSIR, there is a very good benefit which the students have, that there is a huge overlap. Like, for example, in GS, there is a very good overlap of polity,
maybe some governance, IR in what you study for GS paper 2, for GS by GS, I mean prelims paper 1. So if your Lakshmikant is solid, if your current affairs of polity and IR is solid, you are already doing a lot of like pol science. So don't think that you are not doing anything. And then we come to the static portions, like for example, paper 1 section A, then there are some paper section B components, and then there are paper 2 section A components. If you feel, if you have some time available, target only one component, because in this time you cannot cover everything. So if you want to cover paper 1 section A, just do that maybe for 15, 20, 25 days, then continue with the prelims preparation. And after prelims, just have a basic, like you have maybe write down somewhere that you have not covered paper 2 section A, just do that properly. Because if I tell you, I and maybe Tarun and maybe few people like who have given mains or maybe multiple times, for us revising paper 2 or paper 1, it takes us very less number of days. Why? Because we have done it umpteen number of times. So I am telling you, based on my like experience, you can do the paper 2 section A after prelims as well, because your paper the current affairs portion is already covered. So try to at least do the static small components right now. That will be taken care of. And when I address Akash's doubt, and Sakshi, if maybe something which I'm telling you is you've not been able to comprehend, you can please like personally message me. I'll answer your query. And Akash, yaar, aapke liye, I'll just simply say कि अगर if there is a big gap between what you have 3 से 4 महीने, if there is a gap of 3 or 4 months, just go through the topics once and just try to write answers on them. क्योंकि ये like every time if you have not revised, you will write something else. So just quickly go through your notes, take this year's paper, last year's paper, just try to write few answers, and slowly and steadily you will improve. Because in humanities, ultimately what matters is your approach and your thought and how many times have you revised. If you are seeing that I can structure a question the moment you are telling me right now, it's only because I've gone through that process umpteen number of times. And you can also do the same thing. Just go through your notes 1, 2 or 3 times. If possible, tell it to some friend, or if not, just create an audio note in your phone. Maybe what does Marx say? Marx you can create a 10-15 minutes of audio. Whenever you want to write an answer on Marx, listen to that audio, just write an answer. That's it. Sir, but you need to write. Yeah. Sir, is it okay? Sir, is it okay if we like done a particular topic once, and if we are unable to write the answer, like without knowing the question, not that, like we are unable to write the answer, and we in between take a look to our notes and just write the answer by looking at our notes. Is it okay if we do that, or it's... Yes. It's absolutely fine, because I will tell you, when I started to write my answers, Shubhra ma'am simply had told me 2 things. One was that you can refer to your answers, notes, everything, and even after referring, creating a good answer is not an easy task, because you have to ensure the structure is fine. So initially you can take note of it, no problem, but slowly and steadily you will understand, acha, this is how we introduce, this is how we write the points in the body, this is how we conclude. So you will easily understand the process. So it's absolutely no problem if you are taking some use of it. Don't worry. And so one more thing. Yeah. What kind of news, like particularly we should follow for PSIR? Like doing the editorial part is okay, or something extra that we have to focus more when we do the current affairs for PSIR? Yeah, for PSIR, like right now, I think for at least for the last 15 or 20 days, I have been forwarding very good editorials from the papers. You can follow that. If you're not able to follow that, just follow one newspaper, be it Hindu or Indian Express. And even if you're not able to follow that, after prelims, there is still a long time. There are still some articles which you can go through, maybe of C. Raja Mohan, Harsh V. Pant. So that is not an issue, because for political science, and please go through this year's paper again and again, so that you have an idea. For example, if they ask a very difficult question on maybe some topic,
So you would then modify your preparation accordingly. In that, you will add some components like, okay, you did not read some particular defense deal or some particular topic. So that will be a guide as to how to prepare further, which is why I'm saying the paper which is happening on Sunday, devote at least 1 or 2 days to it. Just look, just see whether your sources are good enough to answer those questions. If not, then try to just at least think of all the possible ways in which you can do. And we will surely discuss it on Sunday or on Monday. So don't worry about Okay, it. sir. Yeah. So Abhi, I think the last question we will take is for prelims. तो अभी कुंवर, if you can answer the question for our friends. अगर उसमें कुछ ऐड करना होगा तो मैं ऐड कर दूंगा. कुंवर, अभी आर यू लिसनिंग? हेलो. हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल साफ आ रही है. हाँ, तो जो लोग मतलब प्रीलिम्स के लिए पूछ रहे थे, मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और उसके बाद भी नहीं हो पा नहीं, रहा है मॉक में किसी के प्रीलिम्स. अच्छे हैं, किसी के अच्छे नहीं भी हैं. बोथ केसेस अच्छा हैं यहाँ अच्छा. पे. हाँ ठीक है, मतलब उसका वो नहीं है. तो मतलब मेरा जो स्ट्रेटजी रहता है, जैसे पूछ रहे थे कि क्या रहता है, कैसे हो जाता है. तो देखो, मेरा सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहता है कि स्टैटिक पे मेरा मोस्टली फोकस मेरा स्टैटिक पे रहता है. लोग मतलब यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप के लोग हैं जो मतलब साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, या लास्ट में कंसोलिडेट करते हैं अपना करंट अफेयर्स. पर मुझे अपनी प्रिपरेशन में जो मुझे शुरुआत से समझ में आ गया था कि 50 to 60 questions are coming from the static portion only. If you are leaving that, मतलब उसको अच्छे से अगर तुम प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तुम्हारा बहुत ज्यादा चांस है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि करंट इतना बड़ा सोर्स है. इतने सारे, तुम विजन का 1000 पेज का मटेरियल होगा, किसी और का इतने पेज का मटेरियल, यू कैन नॉट रिटेन एवरीथिंग. तो अगर उसको रिटेन नहीं कर सकते हो, तुम्हारे पास केवल एक टैंजिबल चीज बचती है, वो है तुम्हारे स्टैटिक. तो स्टैटिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि अगर 50-60 क्वेश्चन स्टैटिक के आ रहे हैं तो अज्यूम भाई ओके. तो अभी मैं हिंदी में बोलता हूँ, उसके बाद में इंग्लिश में बोल लूंगा कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है, बिकॉज a lot of friends from south have also joined, so just हाँ ठीक है, मैं बाद में इंग्लिश में समझा दूंगा. तो होता ये है कि अपनी क्या स्टैटिक पार्ट पे फोकस करो. और प्रीवियस ईयर का तुम देखो, मतलब कि जैसे मैंने पिछले 5 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, तो मेरा निकला हुआ है. 2 में मेरा फॉरेस्ट में निकला था, बाकी में मेरा वैसे नहीं निकला है, मतलब फॉरेस्ट नहीं निकला है. ऑल्दो मैं फॉरेस्ट के बॉर्डर पे ही रहता था, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत मार्जिन से ऐसा वो नहीं हुआ है कभी. तो तुम प्रीवियस ईयर 5 साल के देखोगे तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन देखने की कोशिश करो. मोरलेस तुम्हारा साइंस एंड टेक में एक जो रिकरेंट थीम है, वो तुम्हारी 3 पेरेंट बेबी वाली जो रिकरेंट थीम है, उसका क्वेश्चन पिछले 4 से 5 साल में देखो कि घुमा फिरा के उन्हें सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है, और वो क्वेश्चन बहुत सारे लोग गलत करते हैं. सिमिलर केस है तुम्हारा ग्रेविटेशनल वेव के साथ. जब से ग्रेविटेशनल वेव की डिस्कवरी हुई, हर साल यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, वेदर इट इज टू हाउ दे आर मेजरिंग ग्रेविटेशनल वेव, जैसे कि क्या इलिसा वाला क्वेश्चन था, या जो ये वाला जो 2020 में क्वेश्चन था, या कि इस डिस्कवरी से तुम क्या यूज कर, इस डिस्कवरी का इंपॉर्टेंस क्या है, जो उन्होंने 2019 में पूछा. उसके पहले उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, या कि स्पेस एक्सेलरेट कर रहा है नहीं कर रहा है. तो कुछ चीजें जो वो हर साल पूछ रहे हैं, इन चीजों को तुम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते. तो मतलब मुझे ये लगता है इसके बाद जब तुम्हारे स्टैटिक प्रिपेयर हो गया, और मैं ये नहीं बोलूँ कि करंट इग्नोर कर दो, करंट करो, पर करंट शुड नॉट, केवल करंट बस मत करो. लोग यही कर रहे हैं कि साल भर ये करते रहते हैं कि मैं करंट यहाँ से कर रहा हूँ, मैं करंट वहां से कर रहा हूँ. करंट तुम्हारे प्रिपरेशन को एनहांस करेगा. तुमको मतलब कभी प्रीलिम्स करंट से क्लियर नहीं कर पाओगे. अगर पेपर आ गया 2016 टाइप का, जिसमें 34 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के आए थे, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प. पर अगर पेपर जो लास्ट के 2 साल में हो रहा है कि करंट बहुत ही कम आ रहा है, तो यू वुड करंट का ज्यादा वो नहीं होगा. पर किसी साल का पेपर उठा लो, स्टैटिक का एक सिग्निफिकेंट चंक होता है, उसको मिस मत करो. ये पहला पॉइंट हो गया, मतलब ये जो पढ़ाई करनी चाहिए उसके बारे में. सेकंड पॉइंट ये है कि
मॉक अटेम्प्ट करना है या क्या अटेम्प्ट करना है, या यूपीएससी के प्रीलिम प्रीवियस ईयर करना है। तो मॉक का मेरा मतलब मेरा इस एंटी फ्रेजाइल से भी यही बात हुआ है। मैंने उनको भी यही सजेस्ट किया था बहुत बार कि मॉक जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं बिना पढ़े अटेम्प्ट करता हूँ, मतलब बिना पढ़े कुछ भी अटेम्प्ट कर देता हूँ, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे मार्क्स 2 आए 0 आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉक इज ओनली कि मेरा प्रिपरेशन कहाँ लैग हो रहा है ये चेक करने के लिए। मॉक के मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा कितना भी है, तुम्हारा 200 भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हारा अगर 0 भी आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट शुड ओनली बी यूज्ड ऐसा कि तुम्हारा प्रिपरेशन एनहेंस हो सके, कहाँ मेरा लैग हो रहा है, क्या मुझे चीजें मतलब क्या मुझे नया सीखने को मिल रहा है, उसकी तरह से यूज करो मॉक को। थर्ड पॉइंट में ये बोलूंगी, कुछ लोग ये बोलेंगे कि स्टैटिक पढ़ेंगे पर क्वेश्चन बहुत एब्रप्ट आ रहे हैं, जो कि मतलब क्लासिकल जिसको अपन स्टैटिक बोलते हैं, बुक से नहीं आ रहे हैं जो हम लोग रेफर करते हैं। मानता हूं मैं बात, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर रुकमा भाई केस और 1891 कुछ था, और इस टाइप के जो केसेस आए हैं, तो एक जैसे अब ये एग्जांपल देता हूँ, रुकमा भाई केस वाला एग्जांपल था, उसमें पूछा था कि उसका क्या इम्पैक्ट था। तो केस की डेट थी तो तुम्हारे 1884 के अराउंड या 1885 ऐसे कुछ था क्वेश्चन में। तो उसके अराउंड तुम्हें सोचना होगा कि उसके आसपास क्या चीजें हुई थी। तो तुम जब देखोगे तो एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 के अराउंड आया था, तो तुम वहां से लिंक कर सकते हो कि हाँ ये क्वेश्चन उससे लिंक हो सकता है। तो तुम्हें मतलब प्रिपरेशन ऐसा नहीं कि केवल फैक्ट्स याद नहीं करने, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके आसपास का जो सराउंडिंग है, या किस एनवायरनमेंट में क्वेश्चन आया था, या कोई चीज कब डेवलप हुई थी, उसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो चीज भी पता होनी चाहिए। उससे तुम्हारे आंसर्स जो होते हैं निकालने में बहुत आसान होता है, एलिमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है। और मतलब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि कैसे करोगे, पर सीरियसली प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा ये चीज। तो correct. ये तो मतलब 3 मेन चीज में यही करता हूँ। मतलब I will just add 1 or 2 things to what Vikram has just said. अच्छा एक सेकंड, I think somebody is on my gate. कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं आप अप्रोक्स? अटेम्प्ट का मेरा सेम रहता है, मेरा मतलब 95 प्लस ही रहता है। ईयर भी 95 प्लस थे? हाँ मतलब 95 प्लस ही रहता है मेरा, पर मैं ये नहीं बोलूंगा, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। मैं ये नहीं बोलूंगा ब्लाइंडली तुम लोग इतना करो। और ऊपर से ये भी है, जस्ट टू गिव द बैकग्राउंड ऑफ विक्रम, क्या होता है कि बिकॉज ही वाज, या फिर कभी मेरे साथ इनका जब बैक टू बैक इंटरव्यूज वो रहते हैं ना, तो आफ्टर इंटरव्यू हार्डली 1 महीने का टाइम होता है। तो इसीलिए ना, बिकॉज विक्रम क्यों, मतलब जब भी 1 महीने में इंसान फिर कितना करेगा, तो यू हैव टू बैक योर इंस्टिंक्ट्स। हाँ, तो अभी आई वाज जस्ट एडिंग 1 or 2 पॉइंट्स जो विक्रम ने बोला है ऑन दैट, कि जैसे जो स्टैटिक वाली चीज बोली, जैसे इस साल का भी आप अगर प्रीलिम्स देखोगे तो उसमें प्रीलिम पॉलिटी और इकोनॉमी के क्वेश्चंस वर मोर और लेस डुएबल। सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए थे दोनों केस में, और उसमें अगर हम मेजर चंक सही कर ले जाएं तो वी आर एट अ वेरी गुड लाइक स्टैंडिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट कि देर आर सम अप्लाइड क्वेश्चंस ऑफ इन्वायरमेंट के, दिस टाइम इन्वायरमेंट वाज वेरी डिफिकल्ट। व्हाई? बिकॉज उन्होंने जो जैसे लेमन ग्रास पूछ लिया, देन देयर वर क्वेश्चंस ऑन मे बी जैसे बिस्फेनॉल ए और जो ट्रिक्लोसैन, इफ यू हैव नॉट हर्ड ऑफ इट या रेड ऑफ इट, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। ट्रू, बट द क्वेश्चंस मे बी सम क्वेश्चंस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, पॉलिटी एंड इकोनॉमी were doable. And again, because I think mostly the cutoff is maybe most probably on the same lines या उसके आसपास, तो उसमें वही हो रहा है कि इतना हाई अटेम्प्ट अपने को नहीं करना है, या फिर हाई अटेम्प्ट का मतलब the our benchmark is not that high. It's not as if the cutoff is going 115, 120, 130. So if one is fairly confident in the static portions, और उसमें भी if one is confident about polity, economy, or maybe polity, economy and some portions of history/environment, you are very good to go. Ab if you are making mistakes in these components, like for example a lot of people I spoke to, उन्होंने वो कौन सा right to privacy में article 19 और 21 में कोई कंफ्यूज हो गया, then
जो एक क्वेश्चन आया था स्टेट सोवरेनिटी वाला, जो पॉल साइंस वाले स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड, जिसमें स्टेट और एक कौन सा आई थिंक जो 4 कंपोनेंट्स, टेरिटरी, सोवरेनिटी, पॉपुलेशन पूछा था, दैट क्वेश्चन. देन देयर वाज क्वेश्चंस ऑन आई थिंक राइट टू प्रॉपर्टी पे भी देयर वाज अ क्वेश्चन. तो अगर इन क्वेश्चंस में, या फिर मे बी फॉर एग्जांपल इन इकोनॉमिक्स देयर वर क्वेश्चंस ऑन आई थिंक एक देयर वर फॉर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच वर डायरेक्टली रिपीटेड. तो अगर वो सारे क्वेश्चंस में इफ वन इज मेकिंग अ मिस्टेक, एंड जिन क्वेश्चंस में वन इज टेकिंग अ गेस, उसमें ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी कम होती है. तो जो सिंपलर क्वेश्चंस हैं, वही जैसे विक्रम ने बोला, जो सिंपल स्टैटिक वाले हैं, वो वी हैव टू मेक श्योर वो सही करने हैं. एंड उसके बाद, बिकॉज नाउ देन यू आर टेकिंग गेस ऑन द क्वेश्चंस व्हिच यू मे नो, यू मे नॉट नो, उसमें देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी 50-50 हो, या मे बी 40-60 हो, 35-70 मतलब 65 हो. तो इफ ये सारी चीज जब बन जाती है, तो दैट मे बी गिव्स यू 100, 105, 110 मार्क्स. एंड इफ यू आर लाइक जिसका फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड योर गेस वर्क इज गुड, यू कैन ऑल्सो क्रॉस 120, 125, 130 मार्क्स इवन. तो ये सारी चीजें हैं. तो एक्यूरेसी बनती है जो सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, या फिर सिंपल कॉन्सेप्ट्स में भी जो अप्लाइड कॉन्सेप्ट्स हैं, इफ वन इज फेयरली गुड एट दोज थिंग्स, तो दैट सर्टेनली हेल्प्स. अच्छा, I think Sarath has joined us and Hari has also joined us right now. So if you have any specific questions, you can let us know. Otherwise, we would wrap this up, I think, very soon, because it's already, I think, some 70 minutes. If you have any further questions on prelims, you can please let us know. Sir, Yeah. sir, sir, everybody says that we need to develop problem solving attitude in prelims paper. What is that? Right. हेलो. हेलो. हाँ. Yes, sir. हाँ, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मतलब बोल देते हैं, सही बात है कि हाँ मतलब समझ में नहीं आता है लोगों को कैसे करना है. तो इसलिए मैंने एक चीज बोली है, मतलब मेरे को जो वर्क किया है, मतलब मैं बहुत ज्यादा मतलब ऐसे नहीं बोलूंगा कि सबको ये वर्क करता है, क्योंकि सबका डिफरेंट स्ट्रैटेजी हो सकता है कैसे अप्रोच करते हैं वो पेपर को. तो मेरा मतलब फर्स्ट पहले दूसरे अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि वहां पे तुम्हें बहुत पढ़ना होता है पहले दूसरे अटेम्प्ट में, उसके बाद तुम्हारा मतलब कि स्टैटिक पोर्शन मतलब कवर्ड रहता है, उसका तुम्हें रिवीजन करना है. तो व्हाट यू कैन डू इज कि पेपर मतलब तुम अपना देखो, मतलब कि तुम क्वेश्चन उठा लो रैंडमली. ऐसा नहीं कि तुमने 7 दिन हिस्ट्री पढ़ी और तुमने हिस्ट्री का पेपर उठा लिया, ऑब्वियसली तुमसे पेपर बन जाएगा. मॉक्स में प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि वहां पे यूपीएससी में जब आप देने जाते हैं तो आपके 6, 7 या 8 सब्जेक्ट जो हैं वो प्रॉपरली घूम फिर के आते हैं. मतलब तुम्हें पता नहीं होता कि कहाँ से, मतलब कि ऐसा नहीं कि हाँ मुझे एग्जैक्ट याद है चीजें क्या हो रही हैं, इतना ज्यादा रिवीजन नहीं होता किसी का. तो जब क्वेश्चन देखो तो उसे बस ये देखने की कोशिश करो कि अगर मुझे आंसर नहीं आता है, इफ आई डू नॉट नो द आंसर, और मैंने इफ आई हैव नेवर रेड अबाउट इट, हाउ वुड आई अप्रोच दिस क्वेश्चन, whether there are some hints given in this question, whether I can apply some background knowledge that I've acquired reading the subject, that I can use to eliminate these options. So it will take some time, but try to solve question not on only on your knowledge basis. Try to use your other skills, like this question, I have read this about this topic, but in this background can I also assume this. मतलब इससे क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि ट्रायल एंड एरर है इसमें. तुम मतलब कि ऐसा नहीं है कि एकदम से तुम्हारा क्लिक कर जाए, तुम्हें बहुत पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे. मैं ये उसमें मॉक में भी कर सकते हो तुम. मॉक्स में करूं सॉल्व अप्रोक्सीमेट? ये कोई वो नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ तुम 100 कर लोगे तो ऐसा आ जाएगा. मैं बोल रहा हूँ अप्रोच ही रखो. तुम 10 मॉक भी सॉल्व कर रहे हो ना, तो अप्रोच ही रखो कि उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे 10 से 15 क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं पढ़े होंगे, तुमने कभी नहीं पढ़े होंगे. उनको ट्राई करो कि मैं सही आंसर्स पर कैसे पहुंच सकता हूँ. वो मतलब तुम्हारा जर्नी है कि वो बैकग्राउंड नॉलेज आएगा या तुम कुछ और चीजें पढ़ रहे हो. जैसे बहुत लोग मतलब कि अपने फ्री टाइम में मतलब इधर उधर के टिप्स बिट्स पढ़ते रहते हैं, उससे बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं. तो और इसमें जस्ट वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, हमने पेपर को जब हम नंबर्स पे जाते हैं ना कि मैंने 100 पेपर्स कर लिए, व्हाई इट डज नॉट हेल्प इज बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर द लर्निंग. मतलब आपने कोई क्वेश्चन गलत किया,
अब उसमें दो चीजें हैं. पहली बात, द क्वेश्चंस व्हिच यू आर गेटिंग राइट आर नॉट बिकॉज उसमें देयर आर सम क्वेश्चंस जो जिसमें आपने गेस किया होगा, तो हम लोग बहुत बार उसको इग्नोर कर देते हैं. तो व्हेन वी टॉक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आफ्टर वी हैव गिवन द टेस्ट, पहली बात वी शुड गो थ्रू द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव गॉट रॉन्ग. उसमें देखो व्हाई वाज माय लॉजिक रॉन्ग, अपनी लॉजिक को क्वेश्चन करो. ठीक है, मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, या फिर आई थॉट मे बी हिस्टोरिकली दिस पॉइंट इज मे बी इसके आसपास होना चाहिए था, दैट पॉइंट इज रॉन्ग, ओके आई विल रीड अबाउट इट. बट देयर आर ऑल्सो क्वेश्चंस व्हिच वी गेट राइट ऑल्सो बाय फ्लूक. तो व्हेन वी गो थ्रू, आप 100 क्वेश्चंस जब पूरे निचोड़ोगे, या फिर व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी गुड एनालिसिस ऑफ इट, उसको टेक दैट एज योर लर्निंग. इसीलिए whenever you talk, when we speak to our friends, don't tell मैंने I've done 30 mocks, 50 mocks, 1000 mocks, does not matter. What matters is उस एक एक मॉक पे या एक एक क्वेश्चन पे how much time I'm spending and मैंने सीखा क्या है. And also a small exercise for the people who have already given UPSC actual prelims, आप अपना पेपर उठाओ, आप जो जो क्वेश्चंस आपने सही करे गलत करे हैं, जस्ट ट्राई टू राइट योर लॉजिकल रीजनिंग जो तुमने सोची थी ऑन दैट पॉइंट या इन दैट एग्जाम. व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज फॉर द एंटायर सेट ऑफ 100 क्वेश्चंस, यू विल फाइंड आउट कि आपने यहां इस तरह की एरर है. एरर को क्लासिफाई करो. इज इट अ एरर बेस्ड ऑन नॉलेज? इज इट अ एरर बेस्ड ऑन मे बी योर ओवर कॉन्फिडेंस? इज इट एन एरर बेस्ड ऑन योर लैक ऑफ गोइंग इनटू द डेप्थ और द अटेंशन? या डिड यू रीड द नॉट वर्ड, या नहीं पढ़ा था? वर यू मेकिंग अ ब्लाइंड गेस? So when you are going through that exercise again and again, your awareness and your knowledge about the entire prelims paper is far superior. क्योंकि यहाँ पे there are also people, maybe Vikram is there, one of my friends Manjusha is there, उसने अपना वीडियो भी डाला था कि how she scored her score from 90 marks to 140 marks. She scored 50 marks in one attempt. ठीक. And I think after her mains, if possible, I'll also ask her to maybe have a discussion with all of you. तो people are able to score 50-60 marks, ऐसा है, so please believe in that. But उसके लिए she actually went into the root cause of why she was making mistake. ऐसा हो सकता है कि आप that your concepts are not well built, आपके पॉलिटी या इकोनॉमी के concepts are not well built, but just to go through that कि नहीं my friends are also doing 50 marks or 50 marks, I should also do that. So you are not only repeating your mistakes attempt by attempt, but you are also not ensuring कि आपका foundation is also solid. So इसलिए be extremely honest and speak the truth when you prepare to yourself. कि आप जो गलती कर रहे हो, please be extremely honest about it. If somebody is asking you or if you're analyzing it yourself, कि maybe इस साल के prelims में, पिछले साल के prelims से, why are you getting low marks? So please don't say to कि नहीं the paper is getting random, but this is this. If you can answer कि नहीं, my concepts in polity or my concepts there or my application of a concept is not right, and what is my solution to improve it? Okay, I will practice more questions. Yes, specifically I will do this. तो जितनी ज्यादा अवर एनालिसिस जितनी अच्छी होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. दैट इज ट्रू फॉर सचिन तेंदुलकर, अगर वो इफ ही इज गेटिंग आउट ऑन ऑफ ड्राइव्स. It is true for Virat Kohli if he's getting clean bowled to James Anderson. It is also true for maybe Michael Jordan अगर वो डंक नहीं मार पा रहा है. So we have to analyze our performances just as आप सोचिए you are going to मतलब go for Olympics or you are just going to compete. तो compete करने के सेंस में your metrics या your preparation has to be rock solid. तो preparation prelims के लिए भी या mains के लिए भी उन compartments में करो. Like we have to make sure okay यहां से ऐसा कर रहा हूं, and always accept there are going to be portions, maybe culture, maybe medieval history, or maybe science and tech, at least 1 or 2 portions which will be weak. But prelims mein you are compensating that through your strong subjects, and nobody is asking you to score 130, 140, 150, 160 marks. You are just required to clear the basic cutoff. तो इसीलिए ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए we need to formulate a strategy. अपनी strengths और weakness पता नहीं चाहिए. I know mine, Vikram knows his, and you should also know yours, so that अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा environment portion is always strong, तो मैं हमेशा environment के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता हूँ, be it any mock test or UPSC, and because of my acquired knowledge over a lot of years मेरे वो क्वेश्चन सही होते हैं. ठीक. But maybe if I am not good at economics, और इकोनॉमिक्स में मैं सारे क्वेश्चन उड़ा के आ रहा हूँ, एंड उस साल में भी 20 क्वेश्चंस आए हो, so that is a stupid thing on my part because my accuracy is going to be poor anyways. So you can think on those lines.
हाँ मतलब जो बोला अमृतांश ने कहा, मतलब एग्जैक्टली यही चीज मतलब मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा था। तो ये मतलब सेम अप्रोच होना चाहिए कि ट्राई एरर करते रहो, कहाँ पे हो रहा है एरर देखो, उसको स्ट्रांग करो अपना पॉइंट। बस मेनली यही है प्रीलिम्स में। एक नॉलेज लेवल के बाद मतलब तुम बहुत ज्यादा चेंजेस कर नहीं सकते हो अपनी प्रिपरेशन में, तो फिर थोड़ा बहुत इधर उधर फाइन ट्यून करनी है अपनी प्रिपरेशन, बस यही रह जाता है। सोर्स मटेरियल सबका सेम ही है, तो ऐसा नहीं वो हो सकता कि तुम कहीं और से पढ़ रहे हो, कोई कहीं और से पढ़ रहा अभी है। क्या प्लान है कि लाइक वी विल एटलीस्ट हैव वीकली सेशंस ऑन प्रीलिम्स विद यू, जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कर लेंगे डिस्कस, सो दैट अभी तो हम लोग वी आर टॉकिंग ऑन वेग लेवल्स, बट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम कि चलो ये क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे एंड वी विल हैव अ डेडिकेटेड थिंग गोइंग ऑन, सो दैट प्रीलिम्स के लिए एटलीस्ट आइडिया के लेवल्स पे या इनपुट के लेवल्स पे यू डोंट फील कि यू आर फाइटिंग अ बैटल अलोन। So be it on Telegram or Zoom or जो भी medium होगा, that can be thought of. So Yes, sir. one can Very on. अच्छा, if anybody else wants to have maybe अगर last कोई question हो किसी का, because I think we have properly addressed a lot of your doubts. Sir, what can be a good source for science and tech for static portion? यार योगेश एक सेकंड अभी रुक जाओ, मैं और लोगों से पूछ लूं। आपने ऑलरेडी पूछ रखा है, आई थिंक सरत हैज नॉट स्पोकन टिल नाउ, हरी या सीएफसी और ए प्रिया, द न्यू मेंबर्स। Hello. Yeah, Sarath, please. Yeah, I mean, regarding the guessing game which you have told, I don't know if you have previously discussed about this. I joined in late, but then yes, how do we improve our art of stone throwing in such vague, unknown questions? Right. Okay. And anybody else, if you have any question, because now we will be just closing it after like your doubt. There is one question of Yogesh. There is one question of Sarath, Hari, CFC, Pooja. If you have any question on prelims, maybe. PYQs को कैसे एनालाइज करना चाहिए अभी? ठीक है, और किसी का क्वेश्चन? कि ये एनवायरनमेंट और जो आप बता रहे हैं कि इकोनॉमी, तो इसके लिए अपना बेस मतलब स्पेशली फॉर द फर्स्ट अटेम्प्टर्स कहाँ से अपना बेस एकदम मजबूत कर लिया जाए? ठीक है। और 4 क्वेश्चंस हो गए, और किसी का क्वेश्चन? बिकॉज देन आई विल आंसर ऑल दीज थिंग। अगर कुछ मेरे मिस होगा तो आई थिंक विक्रम कैन ऐड ऑन इट। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, तो अभी आई थिंक स्टार्ट करते हैं। सो पहली बात तो या CFC is chlorofluorocarbon या it means something else? So it's Chelsea football club. Actually, I like that club. Okay. Chelsea. अच्छा, Chelsea football club. I was asking about comprehension in CSAT. Actually, I have faced problem in that along with. अच्छा, ठीक है. Okay. So I have 5 questions with me. ठीक है. CSAT वाला I'll like tell in the end. तो देखो, पहली बात, the question of Sarath, like how to improve your guessing game. I think basically the thing is, this is a game of iteration, and success in prelims is ultimately a game of your numbers. The more questions you practice, and after your exam, like after your mock test, make a list. Maybe you guessed on 20 questions, you got 5 correct, 15 wrong, your accuracy percentage was X. Keep track of it through maybe Excel sheet or a small diary, and just go through ki aapka what was your logic when you attempted a question. After X number of mocks, you would have a fair idea of how to attempt, because this is an iterative process. Because maybe me, Vikram, we have gone through this process a lot of times. For us, it would require lesser number of mocks at this point of time. But for somebody who's starting out, and if you are not good at it, the only way to get good at something is to do it multiple number of times, and then also learn from your experiences. So that's the answer for Sarath. The answer for just a second, Yogesh, for science and tech. Yeah, Yogesh, primarily you should follow 2 years of current affairs for science and tech. You can follow any magazine or compilation. That is a very good source. But apart from that, I think go through the previous year question which Vikram was telling, कि maybe 3-parent mitochondrial baby or LIGO or something. So just like astronomy type के there are trends, then there are trends related to mRNA vaccines. So उन trends पे just Google and maybe just get yourself acquainted, and after that just try to like go through the previous year questions and the current affairs.
that is good enough, because there is no need to go through any specific source book for that. And agar aapke, if you are good with the logic and related aspects, that would certainly help you. That is fine. Iske baad, I think the question, Akash, what was your question? I actually forgot. PYQs को कैसे एनालाइज हाँ, करते ठीक 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 देखो, PYQ, you should analyze it on 2 levels. This is what also I think Vikram and I used to do. आप उसको themes wise analyze करो और year wise analyze करो. Year wise मतलब at least from 2011 to 2021 you have to have a very solid understanding कि कोई question like why is the question correct, जो बाकी 4 options है why are they framed, how is the way to arrive at that question, and if possible read some new development on it. ये 10 years के लिए करना है. This is year wise analysis. Theme wise analyze करना है, especially for modern history, for history and for environment and for polity, or maybe क्योंकि for economy 10 years is enough, because if you go like back, because economy keeps on changing, it will not help you. Theme wise में go through जो दृष्टि, I think नहीं, what is that document जिसमें 1995 से लेकर 2021 तक दिया हुआ है. So at least for modern history it's very useful. Go through the questions at least 2 or 3 times and you will have a very good sense of how to answer the questions, because that is the best question bank for at least for history. That is helpful. So you can have both theme wise and you can also have both year wise analysis. And for previous year questions, you can also listen to the discussion of vision of any coaching, because the teachers are going to tell you at least good ways to tackle a question. So finally, when you have those things in your mind, so the process of arriving at an answer becomes very useful for you. So that is a good process. Then I think like coming to CSAT, अच्छा अभी apart from it, apart from CFC, किसी और का कोई point बचा है? Okay. So I think only CFC's part is pending. So CFC, देखो, when you have asked about comprehension in CSAT, in my case, I think because I have been reading newspapers and I have a reading habit, and also during my college placements and all, I had this knack of solving questions, and I also prepared for GRE and so on and so forth. So getting reading comprehensions and all of that correct, at least in my case, is easier for me. But if you want to increase your competence, what you can do is you can initially go through all the comprehension questions of from 2021 to maybe I think 2013 or 14. Start with that and see. And apart from 2021, you have the official answer keys for every question. So just try to think, why is UPSC arriving at a particular answer? Because in comprehension, in many questions, 2 questions have very, very similar answers. Like if the question is what is the assumption of the particular paragraph, or what is the logical conclusion of this paragraph, or what does this mean? So you can arrive at that answer based on your basic level of understanding of the language of English. And that you can develop over a period of time. That is not going to develop just on a second. Like for example, maybe Vikram and I, we have been reading newspapers. Why? Because of interviews, because of our love for the subject of current affairs. So if you maybe can find 10 minutes per day, you can go through one editorial, or you can find maybe 10-15 minutes, you can solve at least one passage starting from now. Maybe you can solve a passage every 2 days or every 3 days. So slowly and steadily, your accuracy for CSAT is going to improve a lot. And for CSAT, for everybody who has joined in, I will just say, please don't take that lightly, and just make sure that you are you are solving it so that you don't feel as if it's something very new, right? And I also welcome one of my friends, Ashutosh, who has just joined in. Ashutosh also has a very good knack of prelims. I think he has never, because of his MBA background and overall experience, he has also been fairly good at the game of prelims. So hi Ashutosh. Hello Amratansh. Hi. Hello everybody. So Ashutosh, I also would want to have your perspective. The students have been asking if you can tell maybe in 2 or 3 or 4 minutes, what should they do, especially for prelims? Okay. Because Ashutosh is somebody, because if Vikram attempts 95 questions, if I attempt 90 questions, Ashutosh clears prelims every time, answering maybe I think
75 to 80 questions, if I'm not wrong. Yes, yes. On an average, I attempt around 75 questions. Right. Hello everybody. I think that you can be 100% sure that you will clear prelims. It depends just on your how well you are prepared for the prelims. And I think if you are, you can be very thorough with your static preparation. So what I used to do is that, for example, if I'm covering polity from Lakshmikant, so I'll just read, first 15, 16 chapters, and then I'll solve a lot of static question papers that are being provided by different coaching institutes. For example, I'll take the static question papers from Vision, GSC Score, and then search on net and from other institutes as well. So I'll just try to solve maximum amount of static questions, and then go to the book again and see where I have missed, or what I should, whether I need a second reading to improve my understanding. So on an average, for each subject, I have, for example, for polity, I have solved around 1,000 to 1,100 questions, and then every UPSC question for polity, it becomes easy, a bit easy to attempt, and you can be very sure while attempting those questions that okay, these questions cannot go wrong. So that's why I never have to attempt a lot of questions to make sure that I clear the prelims. So same way I go about for each of the subject, for environment, for economy, for history, modern history, and ancient and medieval history. I read the topic, a section of the syllabus, and then I solve a lot of static prelims question papers from different institutes. And I think Inside IAS has released a few books, questionnaire book for different subjects. So I think you would have a ready-made amount of questions. If you solve from that book, you will not have to go for different papers. So yeah, that's my strategy, to be precise. If you are very thorough with the static, you will 100% clear prelims. I have no doubt in that. And just to add what Ashutosh has said, like when he says that static questions, he means sectional tests. So like his strategy is that he will cover a subject, he will give a lot of sectional tests so that his accuracy for that subject is extremely high. And I will tell you his experiences of maybe to a 2020 paper. In 2020 paper, I think he left all the questions in which most of the people had marked all of the above. Like for example, all the science questions. He did not attempt a single science question, like which was very unusual to hear, at least when I heard about it. But because his foundation is very solid in the sectional topics, so which is why he was able to like score so high. And I think one more thing, that for him the sectional tests are his first priority, and after having a very good priority in all the sectional tests, I think Ashutosh, you don't give more than maybe 6 or 7 full length tests. Is that correct? Right, Amratansh. So I think on the maximum side, I would attempt only 4 to 5 tests, full length tests, because Full length, yeah. I think that while preparing for the current affairs, there's huge lot of content available in the market, and we tend to digress from preparing the core topics, that is the sectional or the static subjects. So that's the strategy. And if you're thorough with your static, definitely around, I think, nearly 70-75 questions, they directly come from the they are related to static subjects. And while attempting those questions, you can be very sure of of the answers actually. So that would minimize, you don't have to guess and then attempt the question. Correct. Because I think last year I remember both Ashu and I had to give the interview of UPPCS, and I think the result had come on 13th September, and from 6th October we had the prelims of this UPSC. So barely maybe 20 days or even less were available, right? Right. And we had to skip the mains of upcoming UP just to be able to give the attempt of this. So yeah, everybody has a different strategy. This because you have also heard basically my or Vikram or Ashu's strategy. So the basic idea is so that you don't need to follow a single portion, but you can think of what suits you best. And I think this initial session, I was just trying to gauge what kind of questions you have, because I think after this we would have some good sessions with my friends also on YouTube, and also we can think of maybe a weekly problem solving with all of you, maybe for 1 hour, wherein we can take your question. We can take proper
polity, economy, these kind of questions, and we can have those sessions so that at least you feel a lot more confident while attempting a question. That will be really good, sir. Sir, one thing I wanted to ask from Ashu sir, because बीच में मेरा net sir कट गया था, because I don't think मतलब जैसे आपने he is Ashu only for me. For you, he will be Ashutosh. आशुतोष यस यस तो सर आपका जैसे आपने बताया कि यू प्ले मोर विद एक्यूरेसी, तो इज इट पॉसिबल कि जैसे 70-75 तक भी हम करके रुक जाएं rather than जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्ट कि हमें ज्यादा करके आना चाहिए if we are following this static वाला thing? डेफिनेटली ब्रो, आई थिंक अगर आपका स्टैटिक जो पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन में वही जो 5 सब्जेक्ट्स हैं बेसिकली आपके, वो थॉरली कवर्ड है. एंड व्हाई आई एम गिविंग मोर फोकस टू स्टैटिक, बिकॉज एक बार अगर आपने फॉर एग्जांपल अगर आप लक्ष्मीकांत रेफर कर रहे हैं पॉलिटी के लिए, अगर आपने वो शिद्दत से पढ़ा है, इफ यू हैव रेड वेरी थॉरली, तो आप बहुत श्योर हो कि आपके पॉलिटी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे. और फिर उसके बाद मैं बोलता हूँ कि सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करता हूँ मैं. तो फॉर एग्जांपल अगर आपने उसके 700-800 क्वेश्चंस डिफरेंट क्वेश्चन बैंक से लगाए हैं, या तो इनसाइट आईएएस का जो क्वेश्चन बैंक आता है उसमें ऑलरेडी मोर देन 1000 क्वेश्चंस हैं, या फिर आपने विजन आईएएस और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लगाए हैं, तो आपकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाएगी. उस पर आपको एक्यूरेसी पे आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा. फिर आपको जो करंट अफेयर्स के यूपीएससी जो बाउंसर्स फेंकता है, वो आपको अटेम्प्ट करने ही नहीं पड़ेंगे. आपको जो मतलब अभी हम लोग क्यों अटेम्प्ट करते हैं वो क्वेश्चन, बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट अवर एक्यूरेसी, तो हमको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, फिर उसमें हमारे नेगेटिव मार्किंग हो जाता है. तो इफ यू आर जी हाँ. एंड शैंक अभी लाइक मेरा आशु का, वी हैव वन मोर फ्रेंड अनिमेश, वो अभी एक्चुअली मेंस लिख रहा है. वो आशु का भी एक्सट्रीम वर्जन है. ही क्लियर्ड 2017, 2018 एंड 29 प्रीलिम्स ओनली बाय अटेम्प्टिंग आई थिंक 65 क्वेश्चंस एंड ऑल. बट उसका केस इज एक्सट्रीम. He will only attempt a question if he knows, and his accuracy is insane. So there are people who are, but then there are very few people like Animesh or Ashu, because a lot of people attempt maybe 85 or 90 just to be on the safer side, because static question is not that great. So yeah, one has to be clear. कुंवर तुम कुछ बोल रहे थे like? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जैसे मतलब मैंने बताया कि मैं 95 प्लस अटेम्प्ट करता हूँ, तो उसके पीछे ये रहता है कि मुझे फॉरेस्ट का प्रीलिम्स क्लियर करना होता है. तो उसके लिए तुम्हें 15-20 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए, तो मतलब वैसा कर नहीं सकता हूँ मैं कि मैं 80 पे रुक जाऊं, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क हो जाएगा फॉरेस्ट के लिए. तो मतलब ये नहीं था, मतलब सब अपने हिसाब से मतलब अपना स्ट्रेटजी देखो कि मतलब कि हाँ 75 पे मेरा बेस्ट आ रहा है या उससे बढ़ा के कर रहा हूँ. मतलब थोड़े थोड़े चेंजेस करके देखो कि तुम्हें खुद समझ में आने लगे कि व्हाट सूट्स यू. मतलब ये कोई इंडिविजुअल का स्ट्रेटजी अलग हो सकता है, मतलब तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर करो उस पे, इस पे मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि हाँ सब 90 प्लस करो, ऐसा कुछ वो नहीं है. क्लैरिटी आ गई काफी, बिकॉज आई वाज आल्सो वरीड विद द सेम थिंग, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था 2020 में, दो आई वाज हाफ प्रिपेयर्ड बट आई वाज स्टिल कॉन्फिडेंट, बिकॉज मेरे मॉक्स में सही मार्क्स आ रहे थे इतने की कट ऑफ क्लियर हो जाएगा. मतलब माय केस वाज लाइक कि मैंने 3 मंथ्स पढ़ा था 2020 से पहले, और मेरा ये मान लो कि लक्ष्मीकांत के आधे चैप्टर तैयार ही नहीं थे उस समय, लेकिन स्टिल मतलब मैंने कहा कि जस्ट आई फील्ड तो एटलीस्ट मैं एक बार दे आऊं, जिससे मैं डायरेक्शन देख लूंगा कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ. तो स्टिल उसमें यही केस हो गया था बस कि मैंने बाद में ही देखा कि मैंने ओवर अटेम्प्ट कर दिया. मतलब मैं एक्यूरेसी सही ले सकता था कि जितने आ रहे थे, अगर मैं 60-60 करके रुक जाता ना, जैसे आपने बताया कि एक आपके फ्रेंड थे, तो अगर मैंने सिर्फ 60 किए होते तो मैं रुक जाता. लेकिन हुआ क्या था उस समय, आई वाजंट अवेयर मच, तो मैं सबका मेरे दिमाग में मतलब सबकॉन्शियस में दिस थिंग वाज अगेन एंड अगेन बीटिंग फ्रॉम बिहाइंड, रिमाइंडिंग मी कि नहीं भाई इसमें 85 तो करने ही होते, एवरीवन हैज सेड कि भाई 85 तो करने ही होते, 85 तो करने होते हैं. उस चक्कर में आई ओवर अटेम्प्टेड, और जो 60 सही भी थे उसके वो सब वो एक्स्ट्रा. ये चीज जो है ना, दिस इज गोइंग टू बी ट्रू एवरी ईयर. हर साल इतना ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा दैट यू हैव टू लाइक गेट थ्रू द एग्जाम. यू आर नॉट श्योर, सो प्रीलिम्स इज जस्ट नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल टेस्ट है. यू आर पुट थ्रू सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल, अगर if I give you the paper right now, and if I ask you to make the choices, right, so you will make, most probably you will score 15-20 marks more. Exactly. But game ही यही है, you have to prepare yourself, mind में भी, कि whatever happens, and your strategy has to be clear in your head. तुम्हारा friend 95 करे, 60 करे, 20 करे, 30 करे, does not matter. What you have decided based on the difficulty of the paper then and there itself. Like, why is MS Dhoni the most successful captain? क्योंकि he addresses the ground realities very well. बहुत लोग सोचते हैं ना,
जैसे I think I remember one of the very famous कुछ match था. It was one of the finals, and every commentator was saying कि धोनी ने कितना slow खेला. He has taken up so many balls, and finally that India has not made an above par score. Maybe above par score वो लोग बोल रहे थे. In the 2020 match, it was 160. India managed around 130. तो जब इंडिया अल्टीमेटली won by maybe 20 or 30 runs, everybody was asking Dhoni, why were you so calm? तो उसने कहा था देखो, the people who are in the dressing room या फिर जो commentators box में या फिर the people who are outside, they don't know the par score on the pitch. मुझे पता है what is the bounce, मुझे पता है what is the difficulty you are going to face. The moment we scored 130, I am sure कि दूसरी team will not be able to score more than 110, because we will also create a lot of pressure. So it's the same thing. There is a lot of mind games which is going to go. So just be prepared for it. That's all I wanted to say. And I think few new people have joined. I would not be now able to take your questions. Utsav, Siddhartha, Priyanka, अगर किसी को लास्ट में कोई क्वेश्चन बोलना, because I think for prelims we have had a good discussion with Vikram and Ashutosh and myself. Finally, if you wanted to ask anything, because now we need to wrap up as well. It's been a very long session so far. Do we have any other question? Utsav or Siddhartha, anybody, if you wanted to ask. Okay, fine. I think this was the first live stream, and I also wanted to celebrate almost 350 members. I think we had 350 members in a very short span of time. So just wanted to reiterate that this group, why is it named Platonic? Platonic, why? Because of course a Plato and political science element is there, right? But apart from that, the initiative is just to make sure your study remains playful. And for that, I will share my experiences and also the experience of my friends like Ashutosh, Vikram, and I would also request them, we will have some sessions with you regularly, wherein we will take queries not just of prelims but also of mains, also perhaps for interview, for how to read, how to think, how to do blah blah, all these things. So just think of it as an initiative. This is not that I am a senior faculty, something like that. Just as a friend of yours who just has a little more experience than you, and I have I also love to share experiences. So just want to thank Vikram and Ashutosh also for their time and also guiding you. And I also thank you for your patience for listening me out. Thank you, sir. Welcome everybody, and we will hopefully meet very soon again. And I would want to keep this engagement on a very regular basis so that all of you are benefited. And if you still have any problems which you are not comfortable to speak, you can always send me a direct message. So with that said, I think now I should be taking your leave. It was great talking to you. So all the best for everybody for your endeavors, and also please take care and have a good night. Bye bye. Bye everybody. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.